Respected Honorable Vice-Chancellor Professor Nandini SAHU Ma'am, esteemed Chief Guest Dr. AMARENDRA KHATUA Sir, our distinguished speakers Professor Harish Kumar SETHI Sir and Professor APARAJITA HAZRA Ma'am. Respected teachers, dear colleagues and enthusiastic participants, a very warm and heartfelt welcome to all of you. It is my immense pleasure and honor to welcome you all to this one-day translation workshop. As the convener of this program, I feel truly grateful to see such a wonderful gathering of scholars, teachers, and students united by a shared interest in translation. Translation is not merely a linguistic exercise, it is a bridge that connects cultures, ideas, and people. In today's interconnected world, translation plays a vital role in promoting understanding, preserving knowledge, and strengthening dialogue across languages and traditions. This workshop has been envisioned as a space where we can explore translation not only as a skill but also as an art and a responsibility. At the outset, I would like to express my deepest gratitude to our respected Honorable Vice-Chancellor Professor Nandini SAHU Ma'am, whose constant encouragement and visionary guidance make such academic initiatives possible. Ma'am, your support inspires us to create meaningful academic platforms for dialogue and learning. I extend a warm welcome to our esteemed Chief Guest, Dr. AMARENDRA KHATUA Sir. Sir, your presence today adds immense values to this workshop, and we are truly honored to have you with us. I also warmly welcome our distinguished speakers, Professor Harish Kumar SETHI Sir and Professor APARAJITA HAZRA Ma'am. We are privileged to have scholars of such depth and experience among us. Your insights will surely enrich our understanding of translation and inspire meaningful discussions. I would also like to warmly acknowledge and welcome all respected teachers who have joined us today. Your presence reflects your commitment to academic growth and collaborative learning. And finally, my heartfelt welcome to all the participants, both offline and online. Your enthusiasm and interest are the true strength of this workshop. I hope today's sessions will offer you new perspectives, practical insights, and meaningful inspiration. Let us use this platform not only to learn but also to share, reflect, and connect. May this workshop become a memorable academic experience for all of us. Thank you all once again for being here and making this workshop special. Thank you. Before we move ahead with the sessions, I would like to make a few important announcements regarding the structure of today's workshop. After the academic sessions, we will have an engaging group activity for all participants. This activity has been designed to make the workshop more interactive and hands-on, allowing everyone to actively experience the process of translation and collaborative learning. We encourage all participants to take part enthusiastically. At the end of the workshop, we will have the certificate distribution ceremony. Certificates will be provided to all registered participants, both offline and online. We request everyone to stay till the concluding session to receive their certificates. I am also very happy to share an important academic update. The articles and write-ups related to translation submitted by participants will be compiled and published in our conference proceedings. This initiative aims to provide a platform for participants to see their work in a published academic form and contribute to translation studies. I would like to express our heartfelt gratitude to our Honorable Vice-Chancellor, Professor Nandini SAHU Ma'am.
It is through her vision, encouragement, and support that this decision has been taken. We sincerely thank ma'am for inspiring us to move forward with this meaningful academic initiative. Once again, thank you all for your participation and cooperation. We look forward to a productive and enriching day ahead. Now it is my proud honor and privilege to invite our respected Honorable Vice-Chancellor Professor Nandini Sahu ma'am to deliver her address. Professor Nandini Sahu ma'am, the Vice-Chancellor of Hindu University, West Bengal, is an Amazon best-selling author, Professor of English and former Director of the School of Foreign Languages, IGNOU, New Delhi. She is an established Indian English poet, creative writer and folklorist, whose literary and academic contributions have earned national and international recognition. Ma'am is the author and editor of 23 books and a double gold medalist during her graduation and post-graduation. She is the recipient of the prestigious Literary Award and Gold Medal from the Honorable Vice President of India for her outstanding contribution to English studies. Her illustrious achievements include the Michael Madhusudan Academic Award 2024, Lifetime Achievement Awards 2024, Tagore Samman 2025, and an honorary fellowship by the International Academy of Ethics, India. Her research interests span a wide range of fields including new literatures, critical theory, folklore and culture studies, Hindu studies, Indian knowledge system and comparative literatures, children literatures and American literatures. Ma'am, visionaries, leadership and intellectual guidance continue to inspire all of us and shape meaningful academic discourse at our university. With great respect, I now humbly invite Professor Nandini Sahu ma'am to deliver her address and bless us with her insightful words. Ma'am, we are honored to have you. Welcome, ma'am. I feel privileged to host this very important translation workshop for one day from Hindi University, West Bengal. I don't think that any other place would have been more apt or more suitable to hold this kind of a workshop. We being a university catering to multiple Indian and foreign languages. We have programs related to translation studies, Hindi literature, history, and political science, and we are in the process of designing very many other programs from social sciences and humanities. And in due course of time, we would introduce sciences and commerce and all of that. I would come back to that, but before that, it's my moral and academic responsibility to welcome Professor Harish Kumar Sethi, a professor and director from the School of Translation Studies, Indira Gandhi National Open University. Professor Sethi is one of the most established scholars in not just translation theory, rather, he has expertise in the pedagogy of translation, practicing translation, and I worked with Professor Sethi for last 20 years. Before I came to Hindi University as the Vice Chancellor, Professor Sethi was my colleague in IGNOU, and he always was my go-to person whenever there was any issue related to translation, theory or practice, or anything related to dealing with subjects, technical, academic, theoretical, or otherwise, vis-a-vis translation studies. Professor Sethi has been my go-to person. I remember I was writing a research paper titled Translation as Power. I don't have a PhD or anything in translation studies. I was just trying to experiment with my knowledge of translation as a practicing translation. And on many occasions, I stumbled upon so many issues. There were some sentences in Hindi, some words in Hindi, which were difficult for me to translate from Hindi to English. That is when I
got to know Professor Sethi very closely, his involvement with translation as a theorist, as a teacher, a professor, and also a practicing translation. I learned practically about his complete engagement, his involvement with academia. I have seen him growing. In fact, we have grown up together in IGNOU. We have worked together. We have collaborated on many occasions. We have discussed so many issues related to translation, Indian writing in English, Indian literature, and the Bhasha literatures in India. And whenever I went to meet Professor Sethi, I came out of his office being enriched. So, this much of respect I have for Professor Sethi. And as the director and professor of the Department of Translation Studies, now they are doing very good work in IGNOU. I remember 20 years ago when I went to IGNOU, 20, 21 years ago when I went to IGNOU as an associate professor. I was very young. I came from Odisha. And then the first thing I got to know in one of our orientation programs is the most popular program was PGDT, PG Diploma in Translation Studies. Then I asked somebody who designed this course. They took a name of they took the name of one or two people, and Professor said he was one of them. They said he was the one who is instrumental in preparing the study material. Then in due course of time, Professor said he came back to us from other positions. He came back to us as a faculty member, and then he got his promotions in due course of time as associate professor and director. And today he is successfully running a very important department. If we look at the NEP, National Education Policy Guidelines, then the Government of India gives a lot of importance to languages. Translation between the 22 scheduled Indian languages and also the two official languages, Hindi and English. Professor Sethi is multilingual. He has expertise in English, in Hindi, and I'm sure a few other languages about which Madhumita will slowly introduce when she introduces him formally. The fact of the matter is, Professor Sethi has been constantly and seriously engaging himself with Indian academia. He goes to many universities as an expert to talk about translation, to help people to practically translate their important and endangered manuscripts to some other languages in India. And then he translates himself and he helps everybody. He's a very popular teacher. His research scholars practically adore him. So do we, of course. We are his younger colleagues, so we too admire him a lot. And Professor Sethi, about today's workshop, when Madhumita told me that, ma'am, I want to hold something related to translation, we are already having a comparative world literature lecture series where more than 70 people have already spoken for us. So I thought Madhumita can do something different where students will be more actively involved through some activities. So I told her that you can invite Professor Sethi, is the director and professor from IGNOU in the Department of Translation Studies. He will train our trainers, he will also train our students. Our faculty members from the Department of Translation Studies and Hindi are doing good work. They're very well published. They're always striving towards something positive, something very progressive. Dr. Madhumita is one of them. She has been working on this, and also Dr. Ajit, he is the coordinator of the Department of Translation Studies and Hindi, is the convener or coordinator, is discipline coordinator, and Madhumita is the convener of this particular program. The difference between some other lectures and this program, Professor Sati, is that today students are very actively involved. After your lecture, Dr. Madhumita is going to give them some activities, maybe some seminal text to translate as a group. Maybe a group of people can translate one text from some Indian language to some other Indian language, or if they want to some foreign language as well. And some questions, answers, some activities, and participation of the students. So the students will have some hands-on training. I'm sure that they will have a lot of questions, but I have told Madhumita not to disturb you continuously after your lecture. If you have time, I know how professors and directors are busy. I have been there, I have seen it. So in case you have time, you can continue for the students activities. Otherwise, even if you log out, and Madhumita takes the questionnaires and some other work from the students, and then she will pass those on to you with the questions, so that you can also guide our students online. Yeah, this is just the beginning of our
collaboration and association with you. My collaboration with IGNOU is never ending. I think till my last breath, I will be working with and for IGNOU. So this is where I am very happy that this collaboration between the Department of Translation Studies of Hindi University and SOTST School of Translation Studies and Training of IGNOU are coming together. So Dr. Madhumita and other teachers from Translation Studies Department will constantly seek your support and your help for their publication, for their practical translation work, and many other assignments related to translation. Today, the students will get to know that translation is no easy job. I would rather say, as a creative writer, I would say that creative writing has been much easier for me than translation. I face so many problems when I try to translate somebody. I remember I was trying to translate some important classical texts from Odia literature to English. I was not satisfied, so I never published them. I'm still working on them. Probably during my next visit to IGNOU, I will have a word with you and I'll have some more discussions with you. So translation is no easy job because you have to get into the mind and the cognizance of another person when you translate. It's not like you have your stream of consciousness, your objective correlative, your stream of thoughts, then you are just writing them. You have to get into the mind and the cognizance of another person, which is very difficult. Sometimes a writer might have written something with one idea in his or her mind, but the translation might have been so different. The presentation could be so different. So, what is translation is the bigger question for our students. It's not a simple or a simplistic term. Like whatever I'm thinking in my mind, I'm putting those in words. So, this is also a kind of translation. I'm translating my thoughts to language. But when you translate another person's mind, and writing and point of view into your own language through your understanding of that person, the challenges are multiple. So I would request and suggest that you, being the expert of translation studies, please guide our faculty and students in today's workshop. After your lecture is over, if I have any question, I will get back to you. With this, I will stop here with congratulations to Dr. Madhumita, Dr. Ajit, and the faculty of Hindi Department and Translation Studies for holding this important workshop. And also congratulations to the participants. I can see so many participants today. Madhumita told me that more than 50, 60 people have already registered. It's so heartening to see that people are registering and they're trying to understand translation. So many congratulations to all the participants. And this is my suggestion that listen to the experts carefully. If you have any questions, pass those on to Dr. Madhumita. She will certainly get back to you with the answers from the experts. This translation workshop should be very useful for you. It's not like one lecture you listen and you go home. It should be actually hands-on training for you. So please proceed and enrich yourself. At the end of the day, probably you will come and tell me that your understanding of translation has become different from what it was. I would stop here. Thank you and welcome, Professor Sethi. Hindi University is deeply obliged to have you. Namaskar. Your words truly set a very tone for today's workshop and have deeply motivated all of us. We are sincerely grateful for your constant guidance, encouragement, and visionary leadership. Thank you once again, ma'am, for your precious presence and blessing. Okay, due to some personal reasons, Dr. Amarendra KHATUA sir may not be able to join, but I would definitely like to introduce sir. Dr. Amarendra KHATUA sir is a distinguished former diplomat and served as Secretary in the Ministry of External Affairs, Government of India. He is a noted author and poet who writes and publishes in multiple languages, including English, Urdu, Hindi, and Spanish. With more than 50 publications to his credit, sir has made remarkable contributions to literature and cultural discourse. He currently lives in Delhi and continues to enrich the literary world through his writing and engagements. ओके, अब मैं आज के पहले वक्ता का स्वागत करते हुए स्वयं को बेहद गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ और हमारे पहले वक्ता हैं
प्रोफेसर हरीश कुमार सेठी सर। प्रोफेसर सेठी ने एमए, एमफिल और पीएचडी के साथ साथ अनुवाद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा दूर शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया है। इन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में 1987 से 2008 तक विभिन्न पदों पर कार्य किया और जनवरी 2009 से वहां के अनुवाद अध्ययन एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ में अध्यापन कार्य कर रहे हैं। उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र है अनुवाद अध्ययन, कोश विज्ञान, पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक अनुवाद, मध्यकालीन हिंदी काव्य तथा प्रयोजनमूलक हिंदी एवं शिक्षण। प्रोफेसर सेठी सर के अनेक संपादित प्रकाशित हैं और देश की विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में इनके अनेक शोध आलेख, लेख और समीक्षाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। आपको अनुवाद के क्षेत्र में मौलिक चिंतन और योगदान के लिए अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से भी नवाजा गया है, जिनमें भारतीय अनुवाद परिषद का राष्ट्रीय स्तर का नाताली पुरस्कार, साहित्य शिरोमणि सम्मान, मानव सेवा प्रेरणा पुरस्कार, सूर्या अंतर भारतीय भाषा सम्मान तथा प्रोफेसर पूरनचंद टंडन अनुवाद साहित्य श्री सम्मान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। प्रोफेसर सेठी सर के व्याख्यान का विषय है अनुवाद शिक्षा शास्त्र के सैद्धांतिक आधार। मैं आदर पूर्वक प्रोफेसर हरीश कुमार सेठी सर से आग्रह करती हूँ कि वे अब अपने विचारों से हम सबको समृद्ध करें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर हरीश कुमार सेठी सर। बहुत बहुत धन्यवाद मधुमिता जी। मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी। आदरणीय प्रोफेसर नंदिनी साहू जी, कुलपति हिंदी विश्वविद्यालय, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं संबोधन के रूप में और क्या कहूँ। जो है आप की ये महानता है कि आपने जो है जिसे कहा जाए जो डिजर्व नहीं करता उसको इतना स्पेस दिया है। जो है मैं विश्वविद्यालय का और आपके सभी सहयोगियों का जो है बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे एक ये बहुत खुशी हो रही है कि अनुवाद से जुड़े हुए जो विद्यार्थी जो इधर भारत के जो है पूर्व के क्षेत्र से संबंधित हैं, उनको अनुवाद से संबंधित जो है मैं अपने जो जानकारी है, जो मुझे जो कहा जाए ज्ञान अब तक मुझे अपने गुरुओं से मिला है, वो आप सबसे जो है शेयर कर सकूं। तो सबसे पहले तो मैम मैं जो है ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो आप जो सपोर्ट को लेके बात कर रहे थे, मेरी व्यक्तिगत भी आप पर्सनैलिटी से वाकिफ हैं। आई एम ऑलवेज एट द डिस्पोजल ऑफ द यूनिवर्सिटी, और खास तौर पे अनुवाद के संबंध में और पीजी डिप्लोमा आपके यहाँ भी जो विद्यार्थी कर रहे हो। अच्छा, मैं अपनी बात मैम हिंदी में ही रखना चाहूँगा, मुझे ज्यादा कंफर्टेबल वो है ना जी। हाँ हाँ, तो आप जो हिंदी में ही बोलिए। हम तो बाइलिंगुअल है, मल्टी, आप हिंदी में ही बोलिए जी। तो एक तो मैं जो है अपनी ओर से ये जो है ये बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूँ कि किसी भी तरह का कोई भी कार्य हो अनुवाद अध्ययन से संबंधित या और अन्य भी संदर्भ में, और खास तौर पे क्योंकि अनुवाद अध्ययन के क्षेत्र में जिस तरह से जो नए नए एरियाज, नए नए टॉपिक्स जिन पर विचार किया जाना है वो सब उभरते रहते हैं। तो ऐसे में विद्यार्थियों को उस चीजों से वाकिफ कराने के लिए आपके संकाय की ओर से बराबर किया जा रहा होगा, लेकिन फिर भी कहा जाए कि थोड़ी उसको जो है अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहूँगा, जब भी कभी आप याद करें किसी भी तरह से, कभी भी ऑनलाइन भी बेशक जो है सुविधा ये उपलब्ध रहेगी। क्यों उसका कारण मैं जो आपने जो है एक तरह से मेरे लिए की नोट एड्रेस के तौर पे जो है भूमिका बांधते हुए अनुवाद के संदर्भ में बताया ही है, उसमें ही मैं ये थोड़ा जोड़ना ये चाहूंगा कि अनुवाद तो एक ऐसा विषय है जिसमें सभी विषय शामिल है। आप चाहे क्रिएटिव लिटरेचर का फील्ड ले लें, साइंस का ले लें, टेक्नोलॉजी ले लें, सोशल साइंसेज ले लें, ह्यूमैनिटीज ले लें, तो हमें सभी के संदर्भ में अगर हम देखें, नो डाउट क्रिएटिव लिटरेचर का ट्रांसलेशन वाला जो एस्पेक्ट जिसके आपने खास तौर पे जो इंडिकेट किया वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके लिए तो जो है एक विशेष कौशल की, स्किल की जो है आवश्यकता होती है।
और खासतौर पर अगर पोएट्री ट्रांसलेशन की बात की जाती है, काव्य अनुवाद की, तो वहां तो हम ये मान के चलते हैं कि अनुवाद जो है वो नहीं हो रहा, वो ट्रांसक्रिएशन है, रिक्रिएशन जैसी बात रहती है। लेकिन अनुवाद का एक आप मोटे तौर पे देखिएगा, मुख्य रूप से दो जो है हमारे जो है एक तरह के प्रेफरेंस के क्षेत्र बनते हैं अनुवाद के। अगर शिक्षण शास्त्र के संदर्भ में ही बात करूं तो इनिशियल वर्क के तौर पर बताऊं तो साहित्य जैसा क्षेत्र है जहां को हम जिसे कहा जाता है कि स्वांतः सुख है, मूल रूप से जो है कि लिटरेचर का ट्रांसलेशन करना जो है अपने स्वयं सुख के लिए जो है किया जाता है। क्योंकि क्रिएटिव राइटर भी जो है अपने जो उद्गार हैं, आप सभी जो है एक तरह से अहोभाग्य वाले हैं कि आपको प्रोफेसर साहू जैसे जो है नेतृत्व मिला है, जो मल्टी डायमेंशनल मल्टीफोकल जो है स्किल और अपनी जो है योग्यता रखती हैं, जो कवित्री भी हैं, साहित्यकार भी हैं, अंग्रेजी की और अन्य जो सभी उनके जो है क्षेत्र में और विस्तार में नहीं कहूंगा। तो इस तरह के जो क्षेत्र देखते हैं वहां पर स्वांतः सुखाय है, लेकिन अनुवाद जो है एक प्रयोजन मूलक क्षेत्र भी हमारे जो है खासतौर पे भारत के संदर्भ में देखें वो बना हुआ है। प्रयोजन मूलक क्षेत्र का मतलब ये हो गया लैंग्वेज फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस जो यूज होती है उसकी एप्लीकेबिलिटी जो कहा जाए, वो भी अनुवाद की जो है उस तरह से आपको हर क्षेत्र में मिलेगी। और जैसा कि अभी आपको मैम ने संकेत भी किया है, जो एनईपी 2020 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो आई है और जिसके कार्यान्वयन की दिशा में जो है प्रयास चल रहे हैं, आप अगर उस नीति के संदर्भ में थोड़ा सा जो है मतलब स्थूल रूप से ही देखें तो आपको ये नजर आएगा कि वो पूरी की पूरी नीति जो है अनुवाद आधारित है। क्योंकि उसमें जो है जहां मातृभाषा के माध्यम से जो है शुरुआती शिक्षा की जो बात कही गई है और आगे भी भारतीय भाषाओं का जो संदर्भ लिए हुए है, वो तब तक सार्थक सिद्ध नहीं हो सकता जब तक कि हम जो है अनुवाद को जो है उसको सही तरीके से व्यवहार में ना लाए। इसलिए मेरा तो ये मानना है कि आने वाला जो टाइम है, अभी तो जैसे चल ही रहा है, इसमें और जो तेजी से जो प्रगति हो रही है वो प्रगति होगी कि अनुवादकों की बहुत अधिक आवश्यकता होगी। और उसमें जो है खासतौर पे जो कहा जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो पक्ष मैम आपसे भी शेयर कर रही थी, वो वाला पक्ष जो है वो एक विशेष अहमियत रखता है। और भविष्य में जो है उस दिशा में भी काम करते हुए अनुवाद के संदर्भ में ज्यादा से ज्यादा जो है करके हम अपने जो व्यवहारिक क्षेत्र है प्रयोजन मूलक क्षेत्रों की जैसे जो मैं बात कर रहा था, उस दृष्टि से अनुवाद जो है बहुत सार्थक सिद्ध होगा। और अगर हम भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में ही देखें तो होता ये है कि भारतीय ज्ञान परंपरा शुरू से हमारे उस तरह से जो उस दृष्टि का आधार लिए हुए नहीं रही जैसे कि उसको महत्व दिए जाने की अपेक्षा रही थी। अब इस पर फोकस किया जा रहा है। तो जो भारतीय ज्ञान परंपरा का जो उद्घाटन है, जो उसको एक तरह से जो सामने लाने का काम जो है अनुवाद के बिना जो है हम देख ही नहीं सकते। सामान्य तौर पर भी अगर आप लोग देखें तो हम सभी के भाषा ज्ञान की सीमा है, कोई 1, 2, 4, 6, 8, 10 या अपनी अगर कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपना कैलिबर रखता है तो कुछ और अधिक भाषाएं जान सकता है। लेकिन भारत में ही देखें और विश्व में भी देखें तो इतनी भाषाएं हैं, उनमें इतना जो है ज्ञान का भंडार है, उसमें इतना जो है सृजनात्मक साहित्य उपलब्ध है, उसमें मानव संवेदना को व्यक्त करने वाला जो साहित्य उपलब्ध है, उससे परिचित होना जो है तब तक संभव नहीं है कि जब तक हम जो है अनुवाद जो है उसके साथ जो है ना जोड़े, यानी कि अनुवाद के जरिए अपनी भाषा में ना लाए। और मोटे तौर पे भी अगर आप देखिए तो जो सोशो कल्चरल जो एटमॉस्फेयर है या पॉलिटिकल कहिए, कमर्शियल कहिए या फिर जो है व्यापार बिजनेस वगैरह से संबंधित है, तो बिजनेस में भी देखें तो अनुवाद के बिना संभव नहीं है। और खासतौर पे जब से भूमंडलीकरण का जो दौर शुरू हुआ है, ग्लोबलाइजेशन का जो दौर शुरू हुआ है, ग्लोबलाइजेशन की कॉन्सेप्ट में जहां पर हम जो है सभी देशों को एक तरह से एक मानते हुए भौगोलिक सीमा का जो है वो बने रहने के बावजूद वाणिज्य व्यापार के संदर्भ में देखते हैं
तो वहां आप देखिएगा कि अनुवाद अपनी जो है अनिवार्य उपस्थिति को बनाए हुए है। उसका कारण ये है कि जो प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, उसकी भाषा कुछ और है और उसने अपने व्यवसाय को दूसरे देश भाषा समाज के लोगों तक पहुंचाने के लिए, यानी कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए, जब तक उसकी अपनी भाषा से यानी कि कंज्यूमर की भाषा से नहीं जोड़ के चलेगा, तो नतीजा ये होगा कि वो उसका जो है अपना व्यवसाय वाली जो बात जो है कही जाए वो भी नहीं हो सकती है। और अगर देखें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही आप एरिया देखिए, जिस तेजी से रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अपने देश में लाने, अपने देश में ज्ञान बढ़ाने और अपने यहाँ के लोगों को प्रोत्साहित करके विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अगर कोई मोटिवेशनल एस्पेक्ट बनता है तो वो जो है अनुवाद है। अनुवाद के बिना इस तरह के आप जो है प्रयास नहीं सोच सकते। मैं सिर्फ संक्षेप में एक तरह से ये कहना चाहता हूँ कि अनुवाद जो है हमारे जीवन की अपरिहार्य आवश्यकता बनी है, यानी अनअवॉइडेबल है। आप उसको जो है औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से हम सभी अनुवाद कर्म से जुड़े हुए रहते हैं। जैसा कि अभी जो है पहले मैम ने बताया कि क्रिएटिव राइटिंग के ही एस्पेक्ट में देखें तो ऑथर जब कुछ सोचता है, या हम आप भी अगर जैसे मैं भी आपके समक्ष जो अपने विचार रख रहा हूँ, तो जो मेरे विचार आ रहे हैं वो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, मैं उन विचारों को शब्दबद्ध कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली क्या हो गया, विचार को भी आपके सामने अनुदित रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहरहाल वो तो चलो मान लीजिएगा कि एक अनौपचारिक जो है संदर्भ लिए हुए हो जाता है। अगर हम औपचारिक स्तर पर भी देखें तो अनुवाद हम जो है बोलचाल में किसी भी दूसरे भाषा भाषी के साथ कम्युनिकेशन करना हो, संप्रेषण करना हो, तो वहां पे हमें जो है अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। आप घर परिवार में देखिए, घर में आप जो है अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आपके आसपास के लोग जो है कोई अन्य भाषा भाषी है, उनसे बातचीत करनी हो, जीवन व्यवहार के अन्य जो क्षेत्र होते हैं लाइफ में, मान लीजिएगा बैंक में कोई काम आ गया है, कि अगर स्कूल का, यूनिवर्सिटी का संदर्भ देखें, तो हर जगह जो है हम ऑफिशियली अनऑफिशियली एक तरह से अनुवाद करते ही रहते हैं। बट अनुवाद मूलतः है क्या? मोटे तौर पे हम ये मान लेते हैं कि जो कुछ एक भाषा में कहा गया है वह उसको दूसरी भाषा में प्रस्तुत कर देना, वह अनुवाद है। हाँ, ये ट्रांसलेशन प्रॉपर के रूप में जिसे कहा जाए कि एक वास्तविक संदर्भ में जिसे कहा जाए, वो तो यही है कि अनुवाद दो भाषाओं के बीच में संपन्न होने वाली एक्टिविटी या गतिविधि है। लेकिन अनुवाद का आपको थोड़ा व्यापक और मैं संदर्भ जो है उस तरफ से लेके जाना चाहता हूँ कि अनुवाद सिर्फ दो भाषाओं के बीच में ही नहीं है, अनुवाद एक भाषा के बीच में भी किया जाने वाला कार्य है। थोड़ा आपको ये अटपटा लग सकता है, या अगर आपके सिलेबस में कवर ना किया गया हो, अगर किया गया हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम देखें तो आप देखिएगा कि किसी भी बात को, जैसे मैं ही एक वाक्य बोल रहा हूँ, उसको स्पष्ट करने के लिए दोबारा ये कह रहा हूँ, मेरे कहने का अर्थ ये है कि, तो एक तरह से अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए विस्तार दे रहा हूँ। तो ये जो विस्तार जो देना है, ये भी तो अनुवाद ही है। आप अपना स्कूल कॉलेज के टाइम का, जो ग्रेजुएशन वगैरह के टाइम को याद कीजिए, अंग्रेजी और हिंदी अगर सब्जेक्ट आपने जैसे आमतौर पे पढ़े ही होंगे, उनमें आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का आता था, कोई जो है स्टैंजा दे दिया, कोई पोएट्री का स्टैंजा हो गया, या कोई कविता का अंश हो गया, दोहा हो गया, नाटक निबंध वगैरह में से कोई टेक्स्ट दिया और आपसे अपेक्षा की जाती थी कि आप उसका जो है प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो ये जो प्रसंग सहित व्याख्या है, ये भी तो अनुवाद ही है, सेम लैंग्वेज में अनुवाद है। और अगर जो है इसी में सेम लैंग्वेज का संदर्भ हम और देखें, मान लीजिएगा कोई प्राचीन भाषा में, यानी आरंभिक भाषा के विकास के आरंभिक दौर का कोई ग्रंथ लिखा हुआ है, उसको कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज में, आज की ही भाषा में, सेम लैंग्वेज मैं कहना चाहूंगा, जैसे आरंभिक हिंदी जो है
उसमें जिस तरह के लेखन चल रहा था उसके बदले जो है आज अगर उसका जो है सरल रूप में यानी वर्तमान जो है खड़ी बोली हिंदी में अगर प्रस्तुत कर रहे हैं तो वह भी तो अनुवाद ही है। अनुवाद का और आपको रूप बताता हूं। आप देखिएगा कि भारत में भी जो है भाष्य टीका की परंपरा रही है। वैदिक जो वेद जो 4 वेद हैं उनकी जो है वेदों की व्याख्या करने का तरीका रहा है, यानी कि जो वैदिक जो छंद होते थे जो लिखे हुए हैं उसके ऊपर जो है उसका डिटेल्ड इलेबोरेशन जिसको कहा जाए तो वो भाष्य करना कहलाता था। और ऐसे ही जो संस्कृत के क्लासिक ग्रंथ रहे हैं उनके ऊपर जो है टीका करना जो है उसको टीका जो कहा जाता है, कमेंट्री एक तरह से कहिएगा, तो वो जो कमेंट्री करना भी जो है वो सेम लैंग्वेज ही है। तो ये जो सेम लैंग्वेज बेसिकली आप देखिए ये भी ट्रांसलेशन ही है। ट्रांसलेशन का एक और आयाम आपको जो है मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे अब हिंदी है कई बोलियों का समूह है यानी डायलेक्ट्स का जो है। अब एक डायलेक्ट में लिखी हुई किताब को कोई किसी जो है सामग्री को दूसरे डायलेक्ट में प्रस्तुत कर दिया जाए, मान लीजिएगा ब्रिज भाषा में जो साहित्य जो खास तौर पे कृष्ण भक्ति साहित्य है ब्रिज भाषा में लिखा हुआ है उसको जो है आप खड़ी बोली हिंदी में या अवधि में लिखे हुए को ब्रिज भाषा में, मगही को, इस तरह से जो भाषा का अंतरण जो है वो बोलियों के स्तर पे मैं जो कहना चाह रहा हूं वो भी सेम लैंग्वेज होने के बावजूद अनुवाद का रूप लिए हुए है। और सिर्फ यही नहीं, जैसे भाषा वैज्ञानिक जो है उर्दू को भी हिंदी भाषा की ही शैली मानते हैं। वो उर्दू को अलग भाषा न मान के एक शैली, तो अगर हिंदी से उर्दू में भी किया गया है दिखावे के मतलब जो आपको दिखने में तो ये लगेगा कि ये जो है एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद है, लेकिन भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से एक भाषा शैली से दूसरी भाषा शैली में है। संस्कृत नुमा कोई टेक्स्ट है उसको इजी फॉर्म में ला देना, इसी तरह से जो है ये कहा जाए कि कई बार ये भी हो जाता है कि सिर्फ विधा का परिवर्तन कर देना। विधा का परिवर्तन का मतलब ये है कि कोई अगर कविता लिखी हुई है कविता को आधार बनाकर उसी भाषा में कहानी डेवलप कर देना, जिसको हम लोग अनुवाद की शब्दावली में एडेप्टेशन शब्द के जरिए भी व्यक्त करते हैं, रूपांतरण भी करते हैं। यह रूपांतरण वास्तव में विधा का अंतरण है, यॉनर का अंतरण है, क्योंकि साहित्यिक विधाओं में आप देखिएगा कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास जैसे जो अलग अलग विधाएं आती हैं, बट एक विधा से दूसरी विधा में अंतरण भी ये एक तरह का जो है अनुवाद ही होता है। तो आपके सामने जो मैं एक ये सिनेरियो जो प्रस्तुत कर रहा हूं वो ये है कि अनुवाद जो है कैसे कई कई आयाम लिए हुए हैं। एक पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिक हुए हैं रोमन जैकॉब्सन, उन्होंने अनुवाद की जो इस अवधारणा को स्पष्ट करते हुए जो कहा जाए अनुवाद के 3 जो है एक तरह के जो है उसके स्वरूप को डिफाइन करते हुए कहा है। पहला है इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन। अब तक मैंने जितने ये प्रकारों की बात की है वो इंट्रालिंगुअल है, बेसिकली सेम लैंग्वेज में, चाहे वो भाषा परिवर्तन मतलब लिपि का परिवर्तन हो या बोली के स्तर पे परिवर्तन हो या फिर विधा के अंतरण की बात आए, भाष्य टीका जैसी परंपरा भी उसी में ही हम फिट मान सकते हैं। दूसरा इंट्रालिंगुअल मतलब हो गया आंतरभाषिक या अंतर्भाषिक जिसको कहा जाए। दूसरा उन्होंने जो अनुवाद जो बताया है वह है इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन, जिससे हम आप सभी वाकिफ हैं और हम आप जो है अनुवाद की अवधारणा को उसी के संदर्भ में देखते हैं। और वह अवधारणा क्या कहती है? ट्रांसलेशन बिटवीन 2 लैंग्वेजेस, जैसे अंग्रेजी से हिंदी, असमिया, उर्दू ना कह के बल्कि ये है उड़िया कहिएगा, और या मराठी और इधर फ्रांस की भाषा फ्रांसीसी हो, स्पेनिश हो, यानी बिटवीन 2 लैंग्वेजेस, इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस के रूप में जिनकी आइडेंटिटी है उनके बीच में किया जाने वाला
भाषा का अंतरण का कार्य जो है वो अनुवाद कहलाता है। पर सिर्फ यही नहीं है, अनुवाद का और आप देखिए कैसे जो है आगे बढ़ता जा रहा है। जो जिसके लिए संकेत उन्होंने किया है रोमन जैकॉब्सन ने, उसके लिए उन्होंने शब्द यूज किया है इंटर सिमियोटिक ट्रांसलेशन, अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद। अब ये अंतर प्रतीकात्मक मतलब क्या हो गया कि जो भाषा से इतर प्रतीक है, साइन एंड सिंबल्स जो है जिसको कहा जाए वो है, और उनको देखकर उनके आधार पर भाषा में अंतरण करना, ये इंटरसिमियोटिक ट्रांसलेशन है। इसको मैं थोड़ा एक उदाहरण के जरिए स्पष्ट करना चाहूंगा। एक विश्व प्रसिद्ध जो है पेंटर हुए हैं लियोनार्डो दा विंची। उनकी जो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर जो पेंटिंग है वो है मोनालिसा की पेंटिंग। और मोनालिसा की पेंटिंग की जो मतलब उस पे तो बहुत ज्यादा चर्चाएं परिचर्चाएं होती हैं, लेकिन मोटे तौर पे आप ये देखिए कि उस पेंटिंग की जो सबसे जो खूबसूरती है वो खूबसूरती है उसकी स्माइल, जो अपने आप में मिस्टीरियस भी है बहुत ज्यादा। और हर कोई अपनी अपनी दृष्टि से उस पेंटिंग को देख के इमेजिन करता है। विश्व के साहित्यकारों ने जो है उस इमेजिनेशन के बेसिस पे कहानी, कविताएं वगैरह, उपन्यास, इस तरह से क्रिएटिव राइटिंग का काम किया है। हालांकि वो ओरिजिनल राइटिंग आप कह सकते हैं, बट वो इंस्पायर्ड बाय मोनालिसा जो है वो है, जो लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग है उसको देख के। तो पेंटिंग क्या हो गया, भाष्यतर जो है प्रतीक हो गया। जो पेंटिंग जो वो बताती है कि वो भाषा के माध्यम से नहीं बता रही भावनाओं को, वो चित्र के रूप में बता रही है। तो चित्र के रूप में जो भावनाएं व्यक्त की गई हैं उनको अगर भाषिक रूप दे दिया जाए तो वो जो है आपका इंटरसिमियोटिक ट्रांसलेशन कहलाता है। ऐसा ही एक उदाहरण भारत के संदर्भ में भी मैं देना चाहूंगा। भारत के एक प्रसिद्ध जो है पेंटर हुए हैं राजा रवि वर्मा, और उन्होंने भारतीय जो है पौराणिक ग्रंथों के आधार पे, खासतौर पे जो है कालिदास के ग्रंथों की ही बात की जाए तो उन्होंने पौराणिक पात्रों का जो है बहुत ही अच्छा जो है चित्रण करते हुए, यानी उनके जो है चित्र वगैरह बनाए हैं, पेंटिंग्स बनाई हैं। उनकी एक पेंटिंग को देख के एक कवि नाथुराम शर्मा जो है वो थे, उन्होंने उसके बेस पे एक लंबी कविता लिखी। उस कविता का नाम है केरल की तारा। केरल की तारा। तो केरल की तारा जो है, भले ही उनकी चाहे ओरिजिनल आप कहते हो, लेकिन वो ओरिजिनल ना होके इंटरसिमियोटिक ट्रांसलेशन है। तो इस तरह देखें कि अनुवाद की अवधारणा कैसे कैसे क्या क्या संदर्भों को लिए हुए है। और अब तो जो है अनुवाद का सैद्धांतिक आधार और जो जैसे विस्तृत और व्यापक होता जा रहा है, अब आजकल उससे भी बढ़ के इंटरमीडिएट ट्रांसलेशन की भी बात की जाती है। जो अगर पीजी डिप्लोमा के विद्यार्थी हैं उनके लिए अभी जस्ट ये जानकारी के लिए, बहुत ज्यादा डीप में इसकी जाने की जरूरत नहीं है। और वो इंटरमीडिएट ट्रांसलेशन क्या है कि वहां पर किसी तरह का विधा का अंतरण नहीं है। जैसे मान लीजिएगा मीराबाई के भजनों पर कोई आर्टिस्ट जो है वो डांस परफॉर्म कर रहे हैं, खासतौर पर अगर हम जो है हेमा मालिनी जी की बात करें, वो अक्सर जो है उनका ये एक प्रिय विषय है, वो करती रहती है। अब देखिए, भजन है रिटन टेक्स्ट, परफॉर्मेंस वो दे रही है, स्टेज परफॉर्म करनी है, उसके साथ साथ वो तरह तरह के भाव मुद्राओं से और उसमें संगीत वगैरह का भी समावेश है। यानी कि हर तरह के माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए भावों को अभिव्यक्त करने का जो प्रयास किया जा रहा है, तो वो इंटरमीडिएट ट्रांसलेशन जो है कहलाता है। बहरहाल ये तो जिसे कहा जाए हरि अनंत हरि कथा अनंता वाली बात है। अब मैं जो है अपने जो है अनुवाद के स्वरूप को सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अनुवाद एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये व्यवहारिक गतिविधि है और इसके साथ साथ जो है ये ग्रेजुअली अब सिद्धांत के रूप में, यानी कि अनुवाद चिंतन का जो है ऐसे डिसिप्लिन जो है विकास होता जा रहा है। और पिछली शताब्दी के जो है सेकंड हाफ में कहिएगा,
अनुवाद एक अध्ययन विषय यानी डिसिप्लिन के रूप में, जिसको ज्ञान का अनुशासन कह सकते हैं, उस अनुशासन के रूप में अपनी पहचान बनाता जा रहा है। और इसी पहचान का ही नतीजा है कि पीजी डिप्लोमा जैसा जो है अगर कोर्स करके, प्रोग्राम करके जो है आप जो है ट्रांसलेटर लग सकते हैं, वहीं इसमें अगर आप एमए यानी कि एमए इन ट्रांसलेशन स्टडीज जैसे जो है करें, उसमें आप आगे चल के पीएचडी करें, तो एकेडमिशियन बनना या अनुवाद सिद्धांत चिंतन की दिशा में जो है गहनता से काम करना जो है वो बनता है। और उस वजह से जो है नए नए ऐसे ऐसे आपको विषय मिलेंगे जिसका आप संभवतः आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि ये भी अनुवाद के परव्यू में आता है। भले ही चाहे वो अनुवाद की राजनीति क्यों ना हो या आइडेंटिटीज का ही संदर्भ क्यों ना लिए हुए हो, ये बातें भी रहती हैं। और भी संदर्भ है, लेकिन अभी मैं उन पर और अधिक ना जाके अगर व्यवहारिक स्तर पे खासतौर पे जो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो हमारे विद्यार्थी बैठे हुए वो पीजी डिप्लोमा वाले हैं, तो उनके लिए ये ज्यादा जरूरी है कि अनुवाद का जो शिक्षा शास्त्र है उसके अंतर्गत सैद्धांतिक आधार क्या है। जब हम अनुवाद के सैद्धांतिक आधारों की बात करते हैं तो यहाँ पे भी थोड़ी सी बात जो है ये निकल के आती है कि अनुवाद सिद्धांत कौन से है। इसका मतलब ये हुआ, ये भी दो पक्ष लिए हुए हैं। एक मोटे तौर पे जो है हम ये मानते हैं कि अनुवाद के बारे में, अनुवाद की अवधारणा, उसके आयामों को स्पष्ट करने के लिए किसी भी तरह का जो सैद्धांतिक आयाम जो है उसमें जुड़ सकता है, वो अनुवाद सिद्धांत की ब्रॉड कॉन्सेप्ट में आता है। अब इन सैद्धांतिक आयामों में ही अगर देखें तो अनुवाद का क्षेत्र हो सकता है, अनुवाद का महत्व हो सकता है, अनुवाद का प्रकार हो सकता है, अनुवाद प्रक्रिया है, अनुवाद की समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, सीमाएं हैं, अननुवाद्यता का प्रश्न है। और उसके अलावा एक अन्य जो प्रमुख आयाम जो है, जो खासतौर पर व्यवहारिक अनुवाद के संदर्भ में देखा जाए तो स्ट्रेटजीज ऑफ ट्रांसलेशन है, यानी अनुवादक किन तरीकों को, युक्तियों को या रणनीतियों को अपनाकर अनुवाद कर्म करता है, और इस दौरान अगर उसके सामने जो समस्याएं, सीमाएं आती हैं, उनका कैसे समाधान करता है। तो ये सभी आयाम जो है अनुवाद सिद्धांत के रूप में भी उनको एक तरह से कहा जाए नाम दे दिया जाता है। और दूसरा जो संदर्भ आता है ट्रांसलेशन के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, तो वो अनुवाद सिद्धांत को हम जो है सैद्धांतिक दृष्टि से जो देखने का, जिसमें अर्थ व्याख्या या संप्रेषण का खास तौर पे जो है बात की, सॉरी समतुल्यता के सिद्धांत की खास तौर पे बात की जाती है। समतुल्यता का मतलब हो गया कि ट्रांसलेटेड टेक्स्ट और ओरिजिनल टेक्स्ट अपने कंटेंट और स्टाइल में जहां तक हो सके क्लोजेस्ट नेचुरली इक्विवेलेंट होना चाहिए, यानी जैसे समतुल्य, बराबर तोला जा सके कि सोर्स टेक्स्ट और टारगेट टेक्स्ट बैलेंस वाइज जितने ज्यादा एक दूसरे के बराबर होंगे, वो ट्रांसलेटेड टेक्स्ट जो है उतना अच्छा माना जाता है। जितना गैप होगा, आप मानिएगा जैसे ये हो गया सोर्स टेक्स्ट या टारगेट, अगर सोर्स टेक्स्ट वो है लेकिन टारगेट को आपने बहुत अच्छा बना दिया, तो वो अनुवाद भी समतुल्यता की कसौटी पे नहीं उतर रहा। और अगर रिवर्स पोजीशन हो, रिवर्स पोजीशन का मतलब ये है कि सोर्स टेक्स्ट तो क्वालिटी में हाई क्वालिटी का है, उसमें बहुत कुछ कहा गया, लेकिन अनुवादक उसको बराबर जो है प्रस्तुत नहीं कर पाया, तो वो क्वालिटी ऑफ ट्रांसलेशन जो है एक तरह का जो है डाउन वाला माना जाएगा। इसलिए वो सिद्धांत के एक अलग विषय है, उन पर जो है जब कभी आपके विश्वविद्यालय की ओर से अगर मौका लगेगा तो मैं और जो है बताना चाहूंगा। उनमें ही जैसे पारिभाषिक शब्दावली जैसे विषय भी हैं जिन पर खास तौर पे ध्यान देने की जरूरत होती है, या पुनरीक्षण, मूल्यांकन, समीक्षा जैसे आयाम भी जो है अनुवाद की कॉन्सेप्ट में जो शामिल होते हैं, वो सभी हैं। लेकिन अगर हम जो है थोड़ा और एलिमेंट्री ही समय के संदर्भ में, और मैं आपसे जो है ये शेयर करना चाहता हूँ कि एक ये ऐसा विषय है जिसमें कई कई जो है एक तरह से जो है व्याख्यानों की संभावनाएं बनती हैं।
उन सभी को समेट कर आपके सामने और प्रोफेसर साहू जी की उपस्थिति में जो है प्रस्तुत करना मेरे लिए अपने आप में जो है चैलेंजिंग है, और जिसको मैं कोशिश करूंगा कि आप सबके सामने प्रॉपरली रख सकूं। तो अनुवाद की ही अगर हम बात करते हैं तो एक तो सबसे बड़ा एक पक्ष आता है कि अनुवाद किस तरह का होता है, कैसा किया जाना चाहिए, यानी कि अनुवाद की प्रकृति के आधार पर अनुवादों के प्रकारों की बात करें तो अब तो ये आज का दौर जो है ये एआई का दौर है। कंप्यूटर ट्रांसलेशन, मशीन ट्रांसलेशन जैसे जो आयामों से जुड़ा हुआ है। तो एक तो ये संभावनाएं बन जाती है कि मनुष्य एज एन इंडिपेंडेंट ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करे, और दूसरा जो है मशीन से अनुवाद करे। मशीन के अनुवाद का एक अलग से व्यापक संदर्भ बनता है, लेकिन उसमें भी आप अगर मोटे तौर पे आपको बताऊं तो वो उसमें जो है अनुवादक जो है या अनुवाद जिसे कहा जाए दो प्रकार से संभव हो पाता है, या तो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन ट्रांसलेशन हो या फिर सेमी ऑटोमेटिक मशीन ट्रांसलेशन। लेकिन भाषाओं की जो विशेषताएं होती हैं, यानी कि हम आप जो भाषा प्रयोग करते हैं, नेचुरल लैंग्वेजेस जो हम जिसको कहते हैं, उनका जो प्रयोग करते हैं उनको मशीन में बांध कर समझाना मुश्किल है 100% जिसको कहा जाए, क्योंकि हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई है, धीरे धीरे जो विकास हुआ है, उसके साथ हमारा भाषिक कौशल भी जो है विकसित होता रहा है। अब उस कौशल को मशीन को समझाना अपने आप में चुनौतीपूर्ण है जो है। इसलिए जो है 100% मशीन ट्रांसलेशन जो है अभी तक जो है उस तरह से सक्सेसफुल नहीं रहा है। तो सेमी ऑटोमेटिक मशीन ट्रांसलेशन जैसी अवधारणा जिसको SAMT कहा जाता है वो भी रही है। अब उसमें या तो ये है कि HAMT हो या MAST, यानी कि ह्यूमन असिस्टेड मशीन ट्रांसलेशन हो या फिर मशीन असिस्टेड ह्यूमन ट्रांसलेशन। इस पर जो है कभी फिर चर्चा करेंगे, कहीं आपको जो है बहुत ज्यादा भटकाव ना लगे। मैं अपने जो मूल उसके जो प्रकारों पे बात करना चाहता हूँ। कोई भी अनुवादक जिसको अनुवाद कर्म का जो है करने का मौका मिलता है तो वो क्या करता है, या तो वो करेगा शब्द को आधार बना के शब्दों का अनुवाद करेगा, यानी जिसको कहा जाता है शब्दानुवाद, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन। अनुवाद करते समय जो है एक सबसे पहले जो एक जनरल स्टाइल ये रह जाता है कि अनुवादक जो है वर्ड्स के आधार पे सेंटेंस को फोकस करते हुए अनुवाद करे। हाँ, कभी वो दौर भी था जो वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन की कॉन्सेप्ट जो है उसमें ये लिया जाता था कि सीक्वेंस ऑफ वर्ड भी वो भी सोर्स टेक्स्ट की तरह ही हो। खासतौर पर अगर बाइबल का जो पुराना अनुवाद जो शुरुआती प्रयास किए गए वो उसी तरह के थे, जिसको हम जो शब्दशः अनुवाद कह देते हैं। लेकिन इस तरह का अनुवाद अनुवाद नहीं है, वो क्वालिटी वाइज जो अच्छा नहीं रहता। अगर आप एज ए ट्रांसलेटर शब्दानुवाद को आधार बना के भी चल रहे हैं तो होना ये चाहिए सोर्स टेक्स्ट के शब्दों को, उसके जरिए जो अर्थ व्यक्त हो रहा है उस अर्थ को समझते हुए आप ट्रांसलेट तो करें, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो आपका टारगेट लैंग्वेज वाला होना चाहिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर आपने सोर्स लैंग्वेज का रखा तो वो आपका प्रयास निष्फल हो जाएगा। इसको जैसे मैं जो है एक उदाहरण के तौर पे कहूँ, अंग्रेजी का एक वाक्य लेते हैं, आई एम ईटिंग फूड। सिंपल सा है, ग्रामेटिकली भी मेरे ख्याल ठीक है। अगर हम इस वाक्य को शब्दानुवाद शब्दशः अनुवाद वाली बात में कहूं तो तब आप क्या करेंगे, आई के लिए मैं हूं, एम के लिए आप हूं कर दें, ईटिंग के लिए खा रहा कर दें, और फूड के लिए खाना। तो क्या ये हिंदी भाषा की प्रकृति के अनुसार है? नहीं है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस फॉर्मेशन जो है हिंदी के नेचुरल फ्लेवर में नहीं है। मैं खाना खा रहा हूं, अगर आप ये करेंगे तो ये शब्दानुवाद की श्रेणी में आ जाएगा। तो अनुवाद करते समय जो है अगर शब्दानुवाद का सहारा लिया जाता है तो उसमें आप भाषा के प्रति जो है इस तरह की सावधानी बरतें। आप ये देखिए
कि जब अनुवाद करना होता है तो शब्दों के जरिए जो अर्थ व्यक्त हो रहा है, जिसको हम जो है काव्य शास्त्रीय शब्दावली में वर्ड वो जो है शब्द शक्ति भी कहते हैं। शब्द शक्ति मतलब पावर ऑफ वर्ड्स या वर्ड पावर जो है। अब ये शब्द शक्ति हिंदी साहित्य या भाषा का जिन्होंने अध्ययन किया वो वाकिफ है। ये शब्द शक्ति 3 तरह की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा का मतलब यह है जो कुछ कहा जा रहा है उसका सीधा अर्थ वही है। लक्षणा जो है कहा कुछ जा रहा है लेकिन उसका अर्थ जो है कुछ दूसरा है। जैसे मान लीजिएगा, अब पहला मैंने आपको वाक्य बताया, मैं खाना खा रहा हूं, वो अभिधा में है, स्ट्रेट वे है, उसमें कहीं कोई एम्बिग्विटी नहीं है। तो ये हो गया अभिधा परक वाक्य। और जब अगर मैं ये कहूं कि एक्स किसी का नाम लेते हुए गधा है, इज ही इज डोंकी, एनिमल है क्या वो, उसके जरिए मेरा जो है लक्षणा, जो टारगेट जो है करना, वो हिट ये करना है कि वो एक्स पर्सन जो है वो मूर्ख है। तो मूर्ख सीधा ना कह के उसको गधा कह दिया गया। और अगर और इसी तरह का सुपरलेटिव डिग्री की तरफ बढ़े तो वो जो है व्यंजना शब्द शक्ति होती है कि कहा क्या जा रहा है, उसका इम्प्लाइड मीनिंग क्या है जो अलग तरह से मारक है। जैसे किसी को सोते हुए को कह दिया सूरज सिर पे चढ़ाया है। अब सूरज सिर पे चढ़ाया का मतलब यह है कि दोपहर अब तक हो चुकी है, अब तक आप सो रहे हो, उठ के काम पे नहीं गए हो जो है। तो एक तरह का जो है शब्दों का जो खेल है ना, अनुवाद में मेन यही है, शब्दों का जो खेल है, शब्दों के जरिए। खेल का मतलब यह है कि जो कुछ व्यक्त करना है उसको आपको समझने की शक्ति होनी चाहिए। तो शब्दानुवाद जो है, अभिधा शब्द शक्ति वाला जो टेक्स्ट होता है उसमें आपके लिए सार्थक हो जाता है। लेकिन जब अगर जो है आप शब्द के बदले भाव को फोकस करते हुए ट्रांसलेशन करें, यानी अपने आप को शब्द की सीमा में नहीं बांधते हुए भाव को केंद्र में रख कर चलेंगे, तो वो आपका अनुवाद जो है भावानुवाद कहलाता है। जैसे बात करूं मैं आपको, इसको थोड़ा उदाहरण से स्पष्ट करना ज्यादा ठीक होगा कि मूल में जो कुछ कहा गया है उसके शब्दों को के साथ अपने आप को ना बांधे, यानी नंबर ऑफ वर्ड्स या उसके इक्विवेलेंट वर्ड्स की तरफ ना जाके उन शब्दों का जो प्रयोग किया गया है उसके जरिए जो भाव व्यक्त हो रहा है उस भाव को आप टारगेट लैंग्वेज में लाएंगे तो वो नेचुरल फ्लेवर वाला होगा। और वो खास तौर पे टारगेट लैंग्वेज की समाज के संदर्भ में, उसकी सोसाइटी के संदर्भ में, उसके कल्चर के में फिट होने वाला होगा। इसको मैं आपको ये दोनों चीजों का एक उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूंगा। आमतौर पे मतलब छोटे छोटे मैं एग्जांपल देते हुए बात रखूंगा जिससे क्लियरली आप ग्रास्प भी कर सके। आमतौर पे जो है कहीं आप नोटिस वगैरह में भी लिखा हुआ देखते हैं, ऑफिस वगैरह में भी या यूनिवर्सिटी में भी बोर्ड लगे हुए हैं, नो स्मोकिंग। नो स्मोकिंग का अगर अनुवाद भी उसी समय आप देखिए तो उसमें नीचे लिखा हुआ होगा, वैसे तो गलत लिखा हुआ होता है, धूम्रपान निषेध। धूमपान है, धूम्र नहीं है। बहरहाल वो चल रहा है तो मैं उस पर कोई कमेंट इतना नहीं कर रहा हूँ, डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जब आपने निषेध नो के लिए ले लिया, स्मोकिंग के लिए धूम्रपान ले लिया, यानी आपने शब्दानुवाद किया। और अगर इसी दो शब्दों का जब मैं ये लिखा हुआ मैं इस रूप में अगर अनुवाद कर दूं, यहां बीड़ी सिगरेट आदि पीना मना है, या और अगर उसमें पोलाइटनेस लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी औपचारिकता लाने के संदर्भ में देखें, कृपया यहाँ बीड़ी सिगरेट आदि ना पिए। अब देखिए अनुवाद में शब्दों का विस्तार आपको नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, यानी मोर देन टारगेट सोर्स लैंग्वेज के जितने वर्ड्स हैं उसके प्रोपोर्शनेटली टारगेट लैंग्वेज में ज्यादा वर्ड्स आए हैं। बट उसके जरिए जो है जो वो अनुवाद है उसमें भावों की सहज अभिव्यक्ति है। क्योंकि धूम्रपान निषेध, अब कोई भाषा मतलब अगर कोई जिसे कहा जाए सिर्फ साक्षर है
या उसको इतनी अधिक भाषा की जानकारी नहीं है, तो वो सोच में पड़ सकता है कि ये धूम्रपान का मतलब क्या हुआ, या धूम्रपान का मतलब क्या हुआ, और निषेध क्या हो गया। और इसके बदले अगर उसी की भाषा में सहज रूप में लिखा हुआ हो कि कृपया यहाँ बीड़ी सिगरेट आदि ना पिए। अब देखिए स्मोकिंग वर्ड जो है उसमें क्या है, एक मतलब ग्रे एरिया बना हुआ है कोई भी चीज की जो स्मोकिंग का संदर्भ है। अगर आप जो है इसका अनुवाद करते समय सिगरेट शब्द का यूज कर रहे हैं, तो जो नियम तोड़ने वाले जो है वो बड़े आसानी से कह देंगे कि यहाँ बीड़ी तो मना नहीं की हुई है, सिगरेट मना की हुई है, तो बीड़ी भी जोड़ दिया, और आदि शब्द कह के और भी जोड़ दिया, डॉट डॉट डॉट, यानी कि उसी तरह का जो भी कोई जो है नशा करने वाला चीज है, चाहे वो कोई भी जिसके जरिए धुआं, वो चिलम जला देना हो, या और अधिक वर्स्ट पोजीशन में कहा जाए तो गांजा चरस जैसी चीज भी आ सकती है। तो आप देखिए कि भाव को अभिव्यक्त करते समय जिस तरह से शब्दों का विस्तार दे के कहा गया है, उसमें एक सहजता तो आ जाती है, पर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जो है विस्तार की संभावना भी बनी रहती है। तो आपके सामने मैंने दो ये बताए प्रकार, एक तरह के शब्दानुवाद है, भावानुवाद है। वैसे तो और भी जो है प्रकार बनते हैं, जिनमें से एक हम बात करते हैं एडेप्टेशन की, रूपांतरण की, अनुकूलन भी जिसको कह दिया जाता है, जिसका मैंने अभी आपको पहले भी थोड़ा सा जिक्र किया है। तो ये अनुकूलन क्या है कि सोर्स टेक्स्ट में जो कुछ लिखा हुआ है उसको टारगेट टेक्स्ट में तो ढाला जाए, लेकिन टारगेट टेक्स्ट में ढालते समय टारगेट टेक्स्ट के देश काल का, टाइम एंड स्पेस को ध्यान में रखते हुए उसके संदर्भ में जो फिट होता हो वो परिवर्तन करते हुए ट्रांसलेट करना। जैसे खास तौर पे अगर हम बात करते हैं शेक्सपियर के जो है उपन्यासों, उसके जो है जो उनके जो लिखे हुए प्ले वगैरह हैं, खासतौर पे जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस से है, मर्चेंट ऑफ वेनिस उन्होंने जो है लिखा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उसका अनुवाद किया, लेकिन वो शब्दानुवाद ना होके या भावानुवाद ना होके वह रूपांतरण था, यानी कि वो भारत के संदर्भ में अनुदित पाठ था जो अपने आप में मौलिकता लिए हुए था। अब ये भारत के संदर्भ में क्या हो गया, अब उन्होंने क्या किया, जो उसमें जो है पात्र थे नाटक के, उन पात्रों को बदला, जो सरकमस्टांस से, जो एटमॉस्फेयर या जो एनवायरनमेंट था उनमें चेंज कर दिया गया। जैसे जो है मान लो करेक्टर्स के नाम है वो बदल दिए, और अगर जो है जो लोकल यानी कि जो वहाँ की जो जिसे कहा जाए सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने वाला, एटमॉस्फेयर को दिखाने वाले जो डायलॉग थे, चीजें थी, उनको परिवर्तित करके भारतीय संदर्भ में कर दिया। ये फ्लेवर जो आप देखें कि कहाँ जो है दुर्लभ बंधु जो है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि ये जो है वो ट्रांसलेशन है। एडेप्टेशन का ही आगे चल के जो आजकल आपने जो है वो, अगर आपने से भी देखा होगा बच्चों में, विशाल भारद्वाज एक फिल्म इंडस्ट्री के जो है डायरेक्टर हैं, उन्होंने मैकबेथ के बेस पे उसका एडेप्टेशन करके मकबूल बनाया, हेमलेट के बेस पे है जो है हैदर फिल्म बनाई, और इसी तरह से जो है और भी जो है मैकबेथ और इसके और भी होंगे, मतलब दो तीन चार उनकी जो फिल्में बनी हुई हैं वो सभी जो है एडेप्टेड फॉर्म में है। और वो एडेप्टेशन कैसा है, उसमें शेक्सपियर नजर नहीं आएगा, शेक्सपियर की राइटिंग नजर नहीं आएगी, बट वो है शेक्सपियर के प्लेस पर बेस्ड है। तो अनुवाद करते समय ये स्टाइल भी होता है। अब इस तरह के स्टाइल का जो है ये अब क्रिएटिव राइटिंग वाला जो है, यानी क्रिएटिव लिटरेचर के ट्रांसलेशन में तो संभव है। जब आपका जो है फंक्शनल ट्रांसलेशन की बात आ जाती है, जिसको कहा जाए कि अलग अलग क्षेत्रों में
जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का एक क्षेत्र है, एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में आपके रूपांतरण का स्थान नहीं है उस तरह से कहा जाए। तो अनुवाद क्षेत्र के आधार पर अलग अलग रूप में जो है नजर आ जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है जिसको हम जो शैडो ट्रांसलेशन कहते हैं। जैसे मैंने मोनालिसा की पेंटिंग की बात की, ऐसे अगर मान लीजिएगा कि किसी ऑथर की किताब के बेस पे अपनी किताब लिखी गई हो, तो उसको भी जो है एक तरह का अनुवाद कहेंगे। और वो अनुवाद क्या है, शैडो, उसके ऊपर जो है प्रभाव होगा। इसको चाहे आप जो है इंस्पायर्ड ट्रांसलेशन भी कई लोग नाम दे देते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, ये साठोत्तरी कविता के जो है और नई कविता के और प्रयोगवादी कविता के जो है दौर के जो है कवि रहे हैं, साहित्यकार भी थे। इन्होंने नदी के द्वीप जो है उपन्यास लिखा। नदी के द्वीप उपन्यास जो है वो मूलतः जो है मूल अनुवाद ना होकर उस पर भी शैडो ट्रांसलेशन की बात की जाती है। और तो और वृंदावन लाल वर्मा का जो है चित्रलेखा जो अनुवाद है, उसको भी हम कहते हैं कि ये एक तरह का जो है शैडो ट्रांसलेशन है। रंगभूमि की ही बात करें अगर, तो विलियम मैकपीस थेकरे का जो है वैनिटी फेयर, ये उपन्यास जो है शायद फ्रेंच में लिखा हुआ है, उसका असर माना जाता है। तो मैं आपको जो इन उदाहरणों के जरिए सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अनुवाद कहीं शैडो रूप में भी आ जाता है। और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में देखें या जनरल भी एक यूज किया जाता है जिस्ट ट्रांसलेशन। जिस्ट ट्रांसलेशन मतलब सार का अनुवाद करना, सारा अनुवाद जिसको कहते हैं। और ये खास तौर पे पार्लियामेंट में आप लोगों को कभी अगर जो है जानकारी मिले या मौका मिला हो तो आपको पता चलेगा कि जैसे मान लीजिएगा कि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, आज डिबेट जो हुई वही डिबेट पूरी ना होके मान लीजिएगा कल भी चलनी है, तो आज की डिबेट में जो कोई डिस्कशन हुआ है उसका ब्रीफ फॉर्म में सेम लैंग्वेज में भी और डिफरेंट लैंग्वेज में भी उसका टेक्स्ट जो है अगले दिन एमपी को प्रोवाइड कर दिया जाता है सुबह, ताकि वो अपनी जो डिस्कशन जो डिबेट जो चल रही है उसको में कॉन्टिन्यूटी में पार्टिसिपेट कर सके। अब ये सारा अनुवाद क्या हो गया कि मान लीजिएगा कि भाई 10 पेज का टेक्स्ट है, 10 पेज के टेक्स्ट को जो है एक पेज में ब्रीफ में बता दिया गया है। 4-6 पेज का कुछ वो है, उसके बारे में 1-2 पैराग्राफ बता दिए। तो वो आप क्या कर रहे हैं कि ओरिजिनल टेक्स्ट में जो कुछ लिखा हुआ है उस ओरिजिनल टेक्स्ट को इन ए ब्रीफ मैनर जिसे कहा जाए वो आप प्रस्तुत करके रख रहे हैं। तो ये सारा अनुवाद खासतौर पे एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में या कहा जाए कि पार्लियामेंट में इसका बहुत जो है उपयोग होता ही है। तो अब तक जो है मैंने जो आपके सामने जो बात रखी वो अनुवाद के प्रकारों के लेकर ये है। और अनुवाद के क्षेत्र में भी देखें, जैसे मैंने आपसे चर्चा ही की है, हर क्षेत्र में अनुवाद की आवश्यकता है और हर क्षेत्र के अनुसार अनुवाद के तरीके या स्ट्रेटजीज जो है वो अलग अलग रहती हैं। लेकिन इस स्ट्रेटजी पे बात करने से पहले मैं थोड़ी सी ये बात आपसे करना चाहूंगा कि अनुवाद करते समय अनुवादक किस प्रक्रिया से गुजरता है, किस दौर से गुजरता है। यानी कि अपना जो है सोर्स टेक्स्ट को पढ़ना और टारगेट टेक्स्ट में प्रस्तुत करना, इस बीच वो किस चैनल से गुजरता है। अनुवाद सैद्धांतिकी में उस पर भी जो है विचार किया गया है। एक पाश्चात्य विद्वान हुए हैं यूजीन ए नाइडा, उन्होंने इस पर जो है विचार किया और उसके 3 चरण बताए। इसके अलावा और भी जैसे बाथगेट वगैरह है, न्यूमार्क है, अन्य लोगों ने भी इस पर जो है बातचीत की है। लेकिन मुख्य रूप से हम अनुवाद के संदर्भ में जब बात करते हैं तो नाइडा के ही फॉर्मूले को अपनाते हुए कहते हैं कि कोई भी अनुवादक जब अनुवाद कर रहा होता है तो 3 स्टेजेस से गुजरता है। अब ये 3 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो वो ये करेगा कि
ट्रांसलेशन के लिए जो उसके पास टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को पढ़ना, समझना और उसका विश्लेषण करना। एक तरह से आप कहिए कि छिद्रान्वेषण करना, या जैसे अगर आपने कभी रुई धुनने वाला जो ट्रेडिशनल स्टाइल वाला काम देखा हो, तो रुई के जो गट्ठर बने हैं उसको तार तार कर देना। ऐसे ही ट्रांसलेटर जो है ओरिजिनल टेक्स्ट को अपने दिमाग में तार तार करके उसके जरिए जो अर्थ है, भाव है, उसको पढ़ने, समझने और एसिमिलेट करने का जो है प्रयास करता है। अब इस तरह के प्रयास में जो है वो जैसे कहा जाए कई तरह के जो है भाषिक, सांस्कृतिक और विषय वस्तु जैसे पक्षों पर ध्यान देते हुए चलता है। जैसे बात अगर करें, हम जो भाषा की बात करें, अब मान लीजिएगा एक वाक्य आया हिंदी में, रमेश चलती बस में चढ़ा। रमेश चलती बस में चढ़ा। अब इस वाक्य में जो है अपने आप में जो विश्लेषण करने के दौरान जो एम्बिग्विटी बन के आती है कि क्या रमेश चलती बस में जो चढ़ रहा है, यानी कि जो बस चल रही थी तब चढ़ रहा है, या खुद चलते हुए जो है उसमें बस में चढ़ा, भागते हुए वाला स्टाइल एक तरह से हो गया। तो ऐसे में दो अनुवाद की संभावनाएं बन सकती हैं। रमेश गॉट इनटू रनिंग बस, या वाइल रनिंग रमेश गॉट इनटू द बस। अब ये देखिए, विश्लेषण का आयाम ये भाषा के स्तर का ये आपको बताने में जो है समझने के लिए मजबूर कर देता है कि ओरिजिनल में कहा क्या गया है। ऐसी समस्या जो कंप्यूटर भी फेस करता है। कंप्यूटर की ट्रांसलेशन में जो है विश्लेषण वाले एस्पेक्ट को कहा जाता है पार्सिंग। कंप्यूटर जो है पार्सिंग के जरिए पाठ को समझने की कोशिश करता है कि शब्द या वाक्य जो है क्या कहना चाह रहा है। जैसे वहां मान लीजिएगा चेस्ट शब्द ही आता है, या इसमें भी ट्रांसलेशन, मैनुअल ट्रांसलेशन में भी देखें, अगर चेस्ट वर्ड आया है तो अनुवादक को ये देखना, सोचना होगा कि चेस्ट जो है पार्ट ऑफ द बॉडी है, या कि चेस्ट जो है अलमीरा वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है। तो अनुवादक को पाठ को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे में जो कल्चरल अगर फ्लेवर की बात करें तो वो भी आ जाता है। जैसे बात अगर करते हैं, ही टेक्स 2 oranges डेली इन द ब्रेकफास्ट। अब अमेरिकन इंग्लिश में जो है ऑरेंजेस शब्द जो है वो संतरा नहीं बताता है, वहां ऑरेंज का मतलब जो है मौसमी से है। तो ऐसे में अनुवादक को जो अनुवाद करते समय ये ध्यान देना होगा कि देश काल का संदर्भ क्या है, तो वो तभी कर पाएगा कि वह मतलब एक्स पर्सन प्रतिदिन नाश्ते में 2 मौसमी खाता है। देखिए, अगर ये चूक हो जाए, यानी कि पाठ को समझ नहीं पाए हैं, तो अनुवाद कैसे कर पाएंगे। तो ये जो विश्लेषण जो है, इस समय अनुवादक एक तरह से पाठक की भूमिका में होता है। पाठक मतलब एज ए रीडर उस टेक्स्ट को पढ़ रहा है, उसके बाद अपने ही दिमाग में वो पाठ को दूसरी भाषा में अंतरित करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है, जिसको अंतरण कहा जाता है। अब अंतरण करते समय वो मेंटल लेवल पे ट्रांसलेटर का काम कर रहा है, यानी टेक्स्ट को एक भाषा से दूसरी भाषा में पेश कर रहा है। और थर्ड स्टेज पे आता है राइटिंग वर्क। राइटिंग क्या है? सोर्स लैंग्वेज में जो कुछ पढ़ा है, जो उसने समझा है, उसका विश्लेषण किया है, उसको वो अपने मानसिक स्तर पे ट्रांसफर कर चुका है, और उस ट्रांसफर किए गए टेक्स्ट को कागज पेन के जरिए या कंप्यूटर के जरिए, जो भी कहिएगा, वो उसको लिपिबद्ध कर रहा है। अब यहाँ आके उसकी भूमिका जो है लेखक की भूमिका हो जाती है। अब यहाँ उसको ये ध्यान देना है कि जिस तरह के वो सेंटेंसेस फ्रेम कर रहा है, वो सेंटेंसेस फ्रेम करते समय जो है सावधानी बरते और लक्ष्य भाषा के हिसाब से जो है वो
उसका जो है गठन करें। तो 3 जो है ये हम माने जाते हैं अनुवाद प्रक्रिया के जो चरण, जिससे गुजर कर अनुवादक अनुवाद कर्म करने तक की स्थिति पे पहुंच पाता है। अब इस प्रक्रिया से गुजरते हुए वो कई तरह की जो स्ट्रेटजीज को भी अपना के चलता है, जिसको हम जो है स्ट्रेटजीज ऑफ ट्रांसलेशन कहते हैं, या अनुवाद की रणनीतियां या तकनीकें, इस तरह के जो है कहा जाता है। अब इसमें सबसे पहले तो एक जो रणनीति की बात की जाती है वो है अंगीकरण, यानी एडॉप्शन की, या बोरोइंग इसको कह सकते हैं, कि सोर्स टेक्स्ट में जो कुछ कहा है या उसके शब्द हैं, उसके बदले अगर हमारे पास कोई शब्द नहीं मिल रहे तो हम उसको जो है अपनी भाषा में लिपि बदलते हुए, ट्रांसलिटरेट करते हुए जिसे कहा जाए, प्रस्तुत कर देते हैं। आप लोग इस तरह के शब्दों से खूब वाकिफ है, और जब से जो खास तौर पे कहा जाए ये मोबाइल टेक्नोलॉजी आई है या कंप्यूटर वाला जो है, आप देखिए कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मॉनिटर, सीपीयू, पेन ड्राइव, इस तरह के जितने शब्द है, मोबाइल फोन का है, एप्लीकेशंस जैसा शब्द है, अब वो व्हाट्सएप, चैट बॉक्स, ये जितने आप देखिए ये शब्द क्या है, ये हम जो है ट्रांसलिटरेटेड फॉर्म में अगर लिख रहे हैं तो उनको ट्रांसलिटरेशन करते हुए लिखते हैं। तो ये हमने क्या किया, शब्दों को अपनी भाषा में अपना लिया। अब वो बात अलग है कि अभी हम इसको, इनमें से कुछ शब्द ऐसे हैं जो औपचारिक रूप से अपनाए गए हैं, और कुछ ऐसे भी है जो अनौपचारिक व्यवहार में चल रहे हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि शब्दों को एक्सेप्ट करने का जो है दायित्व, यानी कि शब्दों को बनाने, शब्दों को निर्माण करने, पारिभाषिक शब्दों के संदर्भ में मैं कहूँ तो ये दायित्व जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, यानी वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग है, ये उसका निर्माण करने का दायित्व है, और विधि के शब्दों के लिए जो है विधि मंत्रालय का है। अन्यथा सभी जो है विषयों का इनका है। तो सीएसटीटी क्या करता है, उसने क्या किया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन और जितने हमारे ज्ञान के क्षेत्र हैं, यानी डोमेन नॉलेज के जितने एरियाज हैं, चाहे वो साइंस हो, सोशल साइंस हो, ह्यूमैनिटीज हो, या उनकी ब्रांचेस, सब ब्रांचेस हो, उसके लिए शब्द निर्मित किए हुए हैं और सीएसटीटी की वेबसाइट पर भी डाले हुए हैं। आप लोग कल को जब अनुवादक बने, नौकरी वगैरह में जाए, तो आपको ये टेक्स्ट को ध्यान में रखते हो कि टेक्स्ट में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है जो टेक्निकल फ्लेवर का है, तो उसके लिए इक्विवेलेंट शब्द आप अपने आप मन से ना गढ़िए, जो सीएसटीटी ने बनाया हो उस शब्द को एक्सेप्ट करना होगा। और सीएसटीटी जो है ये 3-4 तरीके होते हैं जिसको अपना के उसने शब्दों का निर्माण किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से भी बकायदा ये जो है वर्डिक्ट आया हुआ है कि जो सीएसटीटी शब्दावली बनाती है केवल उन्हीं शब्दों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर उनका प्रयोग नहीं करेंगे तो टर्मिनोलॉजी के लेवल पे आप देखिए पूरे भारत में जो है एनार्की की सिचुएशन हो जाएगी, अराजकता की हो जाएगी, कि कोई व्यक्ति जो है उसको एडॉप्टेड फॉर्म में यूज कर रहा है, कोई अलग अलग रूपों में, जिस पर अभी मैं और आपको संकेत कर देता हूँ। तो बहरहाल ये आपकी जानकारी के लिए मैंने सीएसटीटी वाला पक्ष बताया। अब मैं घूम के दोबारा अपने ही मुद्दे पर आ रहा हूँ, स्ट्रेटजीज को लेके। तो एक तो तरीका हो गया, शब्द को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। दूसरा तरीका, अनुवादक जो क्या करता है, शब्दों को अपनी भाषा के अनुकूल थोड़ा बहुत बदल देता है, जिसको हम जो है अनुकूलन या रूपांतरण भी कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं। अब ये एडेप्टेशन क्या है कि हम शब्द को, दूसरी भाषा का जो शब्द आया उसको ले तो रहे हैं, लेकिन उसको अपनी भाषा की ध्वनि के हिसाब से थोड़ा बहुत बदल दो, या बोलने के लेवल पे, जिसको मुख सुख कहते हैं, मुख सुख के संदर्भ में जो है हम उनमें चेंज कर देते हैं। और आप सब वाकिफ भी हैं ऐसे शब्दों से। मैं दो एक आपको एग्जांपल देता हूं। टेक्निक शब्द है, टेक्निक को हमने टेक्निक ना करके तकनीक लिखते करते हैं। एकेडमी शब्द है,
अकेडमी के लिए हम जो है अकादमी लिख देते हैं। ट्रेजेडी है, त्रासदी कर दिया। कॉमेडी है, कामेडी कर दिया। तो ये हमने क्या किया, या तो भाषा के में ध्वनि के स्तर पे परिवर्तन कर दिया, या फिर बोलने में जो कंफर्टेबिलिटी है जिसको कहा जाए, तो शब्दों में ट्विस्ट लाते हुए हल्का फुल्का परिवर्तन करके भाषा का अंग बना लेना। यानी अनुवादक इस स्ट्रेटजी से भी ट्रांसलेशन करता है। अब शब्दानुवाद और भावानुवाद का तो मैंने आपको बताया ही है। शब्दानुवाद में भी जो है जब वो कर रहा हो तो उसको जो अनुवादक को जो कहा जाता है फॉल्स फ्रेंड्स ऑफ ट्रांसलेटर, उनसे बचना चाहिए। मैं बांग्ला भाषा के संदर्भ में जो बताना चाहूंगा एक दो उदाहरण। हिंदी का एक जो शब्द जो है अंग्रेजी के रिसर्च के लिए जो प्रयोग में लाया जाता है वो है अनुसंधान। अब बांग्ला में अनुसंधान का अर्थ जो है वो शोध या गवेषणा जैसा शब्द है। और अगर बात करें जैसे हिंसा शब्द ही है। अब हिंसा का जो फ्लेवर है वो बांग्ला में जो है जाके अगर यही प्रयोग में लाए तो वो ईर्ष्या के भाव को व्यक्त कर रहा है। ऐसे ही अतीत शब्द जब तमिल भाषा में अगर आप देखें तो वहां पे भी इस्तेमाल में तो लाया जा रहा है, लेकिन अतीत जो है पास्ट वाली बात ना होके वो उसमें जो है बहुत या बड़ा इस फ्लेवर को व्यक्त कर रहा होता है। अब सड़ना जैसा शब्द है। अब सड़ना जो है पंजाबी में अगर आप देखेंगे तो सड़ना जो है जैलस भाव के लिए भी आ जाता है, जबकि सड़ना वैसे जो है किसी चीज का जल जाना इस अर्थ को व्यक्त कर रहा है। बनिया शब्द की ही बात लीजिएगा। बनिया जो है ओडिया भाषा में सोनार शब्द के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप प्लीज जो है सजेस्ट कर दीजिएगा। तो अनुवादक को फॉल्स फ्रेंड्स ऑफ ट्रांसलेटर से बचना चाहिए अगर वो शब्दानुवाद का सहारा ले रहा है। भावानुवाद का तो मैंने आपसे चर्चा की ही है, शब्दानुवाद की भी कर दी है। इसके अलावा कई बार ये होता है कि वो सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज कर लेता है या जो भाषा में चलन में आए हुए हों। जैसे बात अगर करें कि हिंदी में कह दिया जाता है ना 16 तरह के पकवान या 56 भोग जैसी जो है शब्द है। अब अंग्रेजी में जो है 56 टाइप्स ऑफ फूड तो नहीं कहेंगे उसको, जो है 16 टाइप्स ऑफ जो है डिशेस तो नहीं बोलेंगे। तो उसके लिए जो है आप एक तरह का अंग्रेजी शब्द यूज करते हैं, इंजॉयबल जो है मील की बात कहती। और कभी कभी जो है ये भी हो जाता है कि फुटनोट या ग्लॉसिंग जिसको बोलते हैं, आइदर फुटनोट के तौर पे या एंड नोट के तौर पे शब्दों का इलेबोरेशन कर दिया। ये खास तौर पे सांस्कृतिक जो शब्दावली होती है, जो सोशो कल्चरल फ्लेवर वाले जो शब्द होते हैं उनके संदर्भ में होता है। सपोज जो है अब इडली डोसा जैसे शब्द जो है, अब कोई अगर जापानीज या चाइनीज के सामने ये शब्द अगर आप प्रयोग करें तो संभवतः वाकिफ ना हो, तब जो है उसको डिफाइन करने के लिए या उस टारगेट को एक तरह से एलेबोरेट करने के लिए आप उसको थोड़ा मीनिंग कन्वे कर लें। अब वो मीनिंग चाहे फुटनोट या ग्लॉसिंग में भी हो सकता है, या फिर जो है आप वाक्य की रचना भी ऐसे कर सकते हैं। एक मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। पिछले 2-4 सालों से खास तौर पे जो ना हैलोवीन फेस्टिवल खूब जो है पॉपुलैरिटी में आ गया है। और उससे पहले का जो ना वो स्पेनिश फेस्टिवल जो टोमोटिनो जिसको कहते हैं, वो टमाटरों से जो वो खेलना करना, और एक वो फिल्म भी आई थी, वो कौन सी थी फिल्म का नाम था, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। वहां पे टोमोटिनो वाला जो है आप अगर आपने से किसी ने देखी हो तो वो जो है उसको सीन को याद कीजिए। या हेलोवीन की बात अगर कर रहा हूँ तो हेलोवीन में क्या वो मुखौटा ड्रावना सा पहन के और उसके बाद वो करने का हो। अब कहीं वाक्य में आया शुरुआत में, जब अब तो चलो थोड़ा पॉपुलर हो गया है, तब इस टेक्स्ट का जब हिंदी वाला देख रहा था तो मैंने फिर उसमें ये किया कि पश्चिमी जगत में मनाया जाने वाला ड्रावना त्योहार हैलोवीन,
एक तरह से उसका इलेबोरेशन दे दिया, ये स्ट्रेटजी बनाई गई। तो ट्रांसलेटर को डिपेंड अपॉन टेक्स्ट सर्कमस्टांसेस, ये तरह तरह की स्ट्रेटजीज को अपनाते हुए ट्रांसलेशन जो है करना होता है। लेकिन इतना जरूर है कि ट्रांसलेशन का काम ऐसा है जो 100% परफेक्शन का कोई भी दावा नहीं कर सकता। अभी शुरुआत में ही जो है आदरणीय प्रोफेसर नंदिनी साहू जी ने भी अपने अनुवाद को लेके बात बताई थी, अपना अनुभव बताया था कि अभी भी जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है वो अनुवाद में उन्होंने रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि अनुवाद जो सही सृजनात्मक अनुवादक होगा ना, वो उसको जो है एक अलग तरह का जो है दुनिया में पहुंचाना चाहेगा ट्रांसलेशन। अब वैसा ट्रांसलेशन जो है वो क्रिएटिव ट्रांसलेशन के लिए वो अभी भी एक तरह से जो है अपने उस स्तर पे उसको जद्दोजहद कह सकते हैं कर रही है। और ऐसा जो है जितने प्रतिष्ठित अनुवादक देखिए उन्होंने किया है। मैं आपको एक उदाहरण उसका देता हूँ। उमर खयाम की रुबाइयां जो है वो पर्शियन अरेबिक वगैरह में लिखी हुई थी। अब अंग्रेजी के जो है जो एक साहित्यकार थे फिट्जरॉल्ड, उन्होंने उन रुबाइयों के आधार पे अपना क्रिएटिव ट्रांसलेशन कर दिया। और उनकी एक बड़ी पॉपुलर जो है स्टेटमेंट है जिसका हिंदी अनुवाद ये है कि भूस भरे गिद्ध के बदले खुदकती गोरैया ज्यादा अच्छी है। अब यहाँ क्या मतलब है कि मान लीजिएगा कि कोई जो है जिसे कहा जाए कि भाई भूसे से भर के गिद्ध की जो है वो चमड़े को जो है, गिद्ध या कोई भी आप माने एनिमल टाइप जो भी है, उसके जो है चमड़े में भूसा भर के उसको खड़ा कर दिया जाए, वो काम का नहीं है। उसके बदले अगर जिसमें जीवंतता हो, लाइवलीहुड हो, वो चाहे छोटी चिड़िया ही क्यों ना हो, वो ज्यादा सार्थक है। तो अनुवाद के लिए भी उन्होंने ये कहा कि एक तरह से सिर्फ जो है थोप दिया जाए, प्रस्तुत कर दिया जाए और उसमें जो है आत्मा ना हो, अनुवाद का फ्लेवर ना, मतलब एक तरह से जो स्वाभाविकता ना हो, तो उस अनुवाद का फायदा नहीं है। ये तो आपको मैं एक एक्सट्रीम सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। लेकिन इतना है कि आमतौर पे अनुवादक जो है तरह तरह की समस्याओं से जूझता है, तरह तरह की सीमाओं से जूझता है, और कई बार जो है अनट्रांसलेटेबिलिटी की यानी अनुवादिता की भी स्थिति बन जाती है। समस्याएं और सीमाएं शब्द तो ठीक है, अनुवादिता का मतलब ये है कि ऐसा भाषा का जो टेक्स्ट जो ट्रांसलेटेबल ही ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा टेक्स्ट ट्रांसलेटेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि टेक्स्ट का कुछ ऐसा कंपोनेंट या कोई भाषा मतलब लैंग्वेज की यूनिट, छोटे मतलब कोई वर्ड भी हो सकता है, फ्रेजेस भी हो सकती है, या थोड़ा बहुत ऐसा पक्ष हो सकता है जो टारगेट लैंग्वेज में संभव नहीं हो पा रहा है। तो अनुवादक जब आप इन तीनों को एक तरह से जो है इकट्ठे मानते हुए चलें, तो जो है अनुवादक जो है समस्याएं भी अनुभव करता है, वो सीमाओं को भी फेस करता है, और अनुवादिता की स्थिति में समस्याएं आती हैं, कोई बात नहीं, वो तो आएंगी, हर काम में ही आती हैं। लेकिन उन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करने पे हल निकल जाते हैं। सीमाओं की भी अपनी स्थिति है। अब इनको अगर हम जो क्लासिफाई करके थोड़ा देखें, अनुवादक किस तरह की समस्याओं, सीमाओं वगैरह को अनुभव करता है, तो भाषा से संबंधित समस्याएं ही जो है कई तो बहुत मजेदार होती हैं। भाषा की संरचना की भी समस्या हो सकती है, भाषा के व्याकरण की भी समस्या हो सकती है, भाषा के जरिए जो अर्थ अभिव्यक्त हो रहा है उसकी भी हो सकती है, या फिर स्टाइल को लेकर भी हो सकती है। ये ऐसा पक्ष है जिसपे बहुत डिटेल में भी बात की जा सकती है, लेकिन मैं आपको समय की सीमा का ध्यान में रखते हुए संक्षेप में ही बताने के लिए कोशिश करूंगा। अब भाषा के स्तर पे ही देखें तो ध्वनि के स्तर की अपनी अलग तरह की समस्याएं हैं। जैसे बात अगर करते हैं हम, एक जो है प्रसिद्ध साहित्यकार है फूको, हिंदी में आप लिख रहे हो फूको,
लेकिन उनके अगर अंग्रेजी के स्पेलिंग आप देखो तो FOUCAULT ये आपको मिलेंगे। एक टेनिस प्लेयर है जर्मनी का जो है जोकोविच, नोवाक जोकोविच। अब नोवाक जोकोविच के जो स्पेलिंग में आप देखेंगे तो डी जो है से शुरू हो रहा है। अब उसमें आप देखिए कि कैसे जो है ये अंतर आ रहा है। फ्रेंच नाम अगर आप खास तौर पे देखें तो उसमें इस तरह के वेरिएशंस बहुत मिलते हैं, जैसे BORGES, बोरखेस, जबकि बॉर्जीज वगैरह बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उससे बढ़ के आप देखिए बड़ा कॉमन एक वर्ड है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट को अगर हम जो है हिंदी में लिखें तो अब आमतौर पर कई लोग रेस्टोरेंट को हिंदी देवनागरी में लिख देते हैं, जबकि उसका हिंदीकरण किया जाए तो वो रेस्तरां है। रेस्तरां और रेस्टोरेंट अंग्रेजी की वर्तनी को फॉलो करते हुए देखिए तो कितना अंतर आपको मिल रहा है। और अगर हम बात करते हैं ऐसे रेनेसां शब्द ही है, रेनेसां जो है वो रीनेसां भी कोई बोल देगा, कोई कैसे कर देगा। इवन मैंने जो है आपसे नाइडा शब्द का भी जो इस्तेमाल किया था अपने जो पहले चर्चा में, उसकी स्पेलिंग है NIDA। तो नाइडा लिखना है कि नीडा लिखना है, ये भी अनुवादक के लिए चुनौती है। तो मैं आपको जो भाषिक चुनौती के संदर्भ में जैसे बता रहा हूँ ये है। ऐसे ही ग्रामर के स्तर पे भी अगर आप देखें तो कई बार तो बहुत मजेदार आ जाता है। जैसे हिंदी में जो हम लोग होता है घर घर जाने का प्रोग्राम बनाना होगा, चलते चलते ये हो गया, यानी द्विरुक्ति जिसको बोलते हैं, मतलब एक ही शब्द को दो बार प्रयोग कर देना, बड़े कॉमन। वो दाने दाने को मोहताज है। अब घर घर के लिए हम ये डोर डोर तो नहीं बोलेंगे ना, उसके लिए डोर टू डोर अनुवाद करना पड़ेगा। दाने दाने के लिए मोहताज की अगर बात कर रहे हैं तो फॉर ऑन एवरी ग्रेन जैसा शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अनुवादक को इस तरह के पक्षों की भी जो जानकारी और बोध कराने का जो काम जो है, ऐसे अर्थ की समस्या रहती है, सामाजिक संदर्भ वगैरह देखें। अब बड़े मजेदार शब्द है जो कॉमनली यूज में आने वाले हैं। फादर शब्द है, फादर कामिल बुल्के, जिनकी डिक्शनरी हर अनुवादक जो है इस्तेमाल में लाता है। तो क्या वो पिता कामिल बुल्के हैं? मदर टेरेसा जो है माँ टेरेसा तो नहीं है, हॉस्पिटल की सिस्टर बहन तो नहीं है। अब गुड गवर्नेंस के लिए तो आप सुशासन लिख देंगे, लेकिन गुड फ्राइडे के लिए भी आप शुक्रवार करोगे क्या? मैं जो आपसे जो चर्चा जो इंडिकेट जो करना चाह रहा हूँ कि कैसे जो है सोशो कल्चरल भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लिमिटेशंस हो सकती हैं, तरह तरह के ये जो है पक्ष बनते हैं। इस तरह के सभी आयामों को अनुवाद के संदर्भ में जो है देखना करना, ये अनुवाद के सैद्धांतिक आधारों में बनता है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो अनुवाद जो है अपने आप में आज की तारीख में बहुत स्पष्ट रूप से रोजगार का क्षेत्र बन चुका है। एम्प्लॉयबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अच्छा अनुवादक कभी भूखा नहीं लगता, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। होना सिर्फ इतना चाहिए अनुवादक के स्तर पे कि वो ट्रांसलेशन करे, व्यवहार से जुड़ा रहे, ट्रांसलेशन के थ्योरीज के जरिए जो है सिद्धांतों के जरिए उनको व्यवहार में लाने का प्रयास करे, और लगातार जुड़ाव ये रहेगा कि उसको जो है अचीवमेंट की स्थितियां बनेगी। तभी तो जो एक सुभाषित के तौर पे एक दोहा है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जा सहित सिल पर परत निशान। तो अभ्यास जो है अनुवाद कर्म में बहुत जरूरी है, और आप अभ्यासरत रहें, शब्दों को स्टोर करते रहें अपने दिमाग में, तो उससे जो है आप कंपटीशन में देखिए, कोर्स करने का मतलब ये नहीं है कि आपके हाथ में रोजगार आ गया। कोर्स करने का मतलब ये आपकी एलिजिबिलिटी बन जाएगी, आप फ्यूचर के लिए compete करने के लिए एक तरह से रेस से जुड़ेंगे, भीड़ का हिस्से में जुड़ जाएंगे। अब उस रेस में जो जितना ज्यादा तेजी से दौड़ के आगे
लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा, उसके लिए उपलब्धि होगी। तो इसमें ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अनुवादक को अपने अंदर जो है ऐसी क्षमताएं विकसित करनी चाहिए। अनुवाद कर्म से, जैसे अगर अनुवादमय होना पड़ेगा, अगर वो अनुवादमय होगा तभी अनुवाद कर जो है, जो इस फील्ड में अपनी एंट्री कर पाएगा, अपने आप को सिद्ध कर पाएगा। और रोजगार के अनंत क्षेत्र है, उनको मैं अभी जो है इस चर्चा में शामिल नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो आप देखिए एडमिनिस्ट्रेशन का हो, लॉ का हो, पार्लियामेंट हो, मीडिया हो, और भी जितने सभी क्षेत्र बनते हैं उस पर फिर कभी विस्तार से चर्चा की जाएगी। पर इसके लिए ये जरूरी है कि अनुवादक जितना ज्यादा डूब के करेगा उतना ही पाने की स्थिति में होगा, जिसके लिए जो एक कबीर का बहुत जो है अच्छा दोहा है, तंत्रीनाथ कवित्र सरिस रास रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सबंग। यानी कि ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें अगर आप पूरी तरह से डूब जाओगे तो तब तो आप पार चले जाओगे, आपका जो उद्धार हो जाएगा रोजगार की दृष्टि से। और अगर कैजुअल अप्रोच रख के चलेंगे तो उसमें जो है डूबने की आशंका बनी रहेगी। इसलिए मैं आप सभी के जो है भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और साथ में ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस फील्ड से आप जुड़ रहे हैं उसमें गहनता, गंभीरता की जरूरत है। और हर समय, हर दृष्टि से आते जाते देखिए, आप अगर जो है कहीं होर्डिंग्स वगैरह देखें, न्यूज़पेपर देखें, वहां आपको अनुवाद के एग्जाम्पल मिलते रहेंगे। आप मन में सोचें, उसको क्रिटिकली इवेल्युएट करें, उसी इवेल्युएशन से आपको जो है ट्रांसलेशन वेटिंग जैसे कॉन्सेप्ट भी आएगी, जिसको अभी मैंने अपनी चर्चा में टच नहीं किया। मुझे लगता है कि कहीं और बहुत ज्यादा जो है आप परेशान ना हो चुके हैं। तो मैं इन शब्दों के साथ जो है अपने वाणी को यहाँ विराम देता हूँ, और एक जो सिनेरियो पेश करने की जो आपके सामने प्रयास किया गया, मुझे लगता है कि कुछ उपयोगी होगा। और आप लोग अपना मंथन कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है फिर जैसे मैम ने इंस्ट्रक्ट किया है मैं उपलब्ध रहूंगा आपसे चर्चा के लिए जो है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर हरीश कुमार सेठी सर, आपके ज्ञानवर्धक और विचारोत्तेजक व्याख्यान के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विषय को जिस स्पष्टता और गहराई से प्रस्तुत किया उससे हम सभी की समझ, आपके अनुभव, विद्वता और सरल प्रस्तुति ने इस सत्र को अत्यंत सार्थक बनाते हैं। हम आपके बहुमूल्य समय और मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत आभारी हैं। एक बार पुनः आपका हार्दिक धन्यवाद। Now I would like to request our Honorable Vice-Chancellor Ma'am to kindly share her valuable remarks on the lecture. Ma'am, please welcome her. Thank you, Madhumita. Professor Sethi, your discourse has been extremely helpful for all of us. It was very well researched, very academic. Also, you attempted to get into so many practical aspects of the challenges of translation. And it certainly comes from your long experience translating practically as well as designing the PG Diploma in Translation Studies and now MA in Translation Studies and those very important programs. Uh, when you talked about the challenges of translation, I was thinking about many occasions when I went to discuss with you about the challenges, and now we are proposing a UGC NET examination in translation studies because the students who, yes, the students are doing MA in translation studies, but after that they do not get any opportunity to get into higher education departments as professors because there is no UGC NET examination in translation studies. Till date, translation studies has remained some unfortunately so it has remained as a secondary or an additional subject of many of the so-called mainstream literature and language departments, whereas the mainstream departments are running because of translation. Imagine any English department in the country from Kashmir to Kanyakumari where there are no academic courses or programs on Indian writing in English translation.
we have been teaching Indian writing in English translation from the various Indian Bhasha literatures, even the oral languages and literatures. Being a folklorist, I have that experience. There is no such discipline called Indian folk literature in English. When it is folk literature, it's orality and it's about translation, translating the thoughts of orality to documentation and writing, and again translating those to English or other languages for bringing those to the university table. But unfortunately, till date, there is no such, UGC net examination in translation studies, and we have been seriously attempting to introduce translation studies as a part of the UGC net examination. And for that matter, I have a draft syllabus which I presented 10 days ago in a high power committee, in front of a committee, where I proposed that we can create a team of people, a pool of specialized people like you and many others, who can actually design a tangible syllabus for as a part of the UGC NET examination in translation studies, so that our students who are doing MA, MPhil or PhD, not MPhil, it's no more, MA and PhD in translation studies, will get an opportunity to get into various departments, because now translation studies is coming up in a big way. So many departments are already introducing translation studies certificate courses, diploma courses, and MA programs. So we are trying to contribute to that. Having said that, I want to put it on record here in front of the experts and the outsiders that Hindi university students, those who have completed their MA in translation studies, they are getting excellent placements. Our students are becoming Rajbhasha Adhikari, they are getting into the banks and many other places where, translators are required or translation officers are required. Our students are getting excellent placements. Our training and placement cell has been introduced, and the training and placement cell is also trying to conduct some programs where the students of translation studies will be given some kind of direction. So, with this in my mind, I would stop here by deeply registering my sense of appreciation for the practical issues and problems related to translation. You gave such beautiful examples. I was listening to you very carefully. The examples were so academic, yet they were so close to life, from our daily life. Like you were talking about, this is a no smoking zone. We see that every time, and then we think, oh, whatever is written in English and Hindi, they are so different. We think, but we can do nothing about those things. And also, you talked something very, very important about machine translation. In the age of artificial intelligence, it's a warning to our next generation that they should not be excited to see their name in black and white, because chat gpt and all, even AI, they are like they're so exciting for our youngsters. They just put something and then a very beautiful text comes out. They will put something in Hindi, then some translated text in English comes out, then immediately they put their name as the translator, and without considering the ethical and the intellectual property rights, they publish those in their names, which is going to be very, very dangerous for them in near future. AI detectors are there. Even if they do not care about intertextuality or polyphony, which is actually plagiarism, but the youngsters have to be very careful when they're translating seminal texts. Last week, I had a keynote address in in some university in West Bengal, where I talked about the intellectual property rights vis-a-vis the translation of Indian knowledge systems and indigenous knowledge systems. When there is no authorship, then who has the authority? My topic was about authorship and authority. So when there is no authorship, when it is an oral text, when it has been translated from transferred from generation to generation, then when we are translating it to English or some other language of power, then we have to also think about the authority. Am I authorized to do it? If I'm not authorized to do it, then who should get the copyright or who should get the intellectual property right? You hinted upon those very, very important issues. I'm sure that the participants have a whole lot of questions for you, and Dr. Madhumita will take the questions and then she will pass those on to you. In the evening also, they have a lot of activities through which they are getting some important texts translated, and then they will probably take your help or support or comments before they get into publishing those things.
I will stop here. I thank you so very much for being a part of Hindi University, and I can already see Professor APARAJITA HAZRA. She just joined, I believe. She is, yes, Professor APARAJITA. Welcome to Hindi University. I'm very glad that you joined. This session Thank you went very very much. well. Pleasure is all mine. Yes, yes, yes. We are so looking forward to listening to you in the afternoon session. And I will talk about your work and whatever is my association with you. I will certainly talk about that. But I'm glad that you are meeting Professor Harish Sethi. He is the director of Department of Translation Studies from IGNOU, and he is an established scholar in Indian writing in English, in translation studies. You take a name, he has been working on those. So I'm glad to introduce the two of you. I will stop here. Thank you and namaskar. Thank you so much for your inspiring ideas. Thank you once again. आपसे जो 1:30 बजे तक का समय है वो लंच ब्रेक का समय है, तो आप सब कृपया लंच ब्रेक के लिए जाएं और आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप ठीक 1:30 बजे हमसे दूसरे सत्र के लिए मिले और जुड़े, जिससे कि सत्र को और कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सके। धन्यवाद। So, okay, Madhumita, so can I log out? Then I will join for the next session when Professor APARAJITA joins again. Sure, ma'am. Sure. So if they want to talk for a while, they can talk. I have to log out. Professor APARAJITA, please feel, yes, Professor APARAJITA, please feel free to talk to Professor Sethi. I have to log out. I'll join again. Okay, namaskar. नमस्कार। Thank you so much. Thank you to all of you. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक म्यूट है। Yes, yes. It's an absolute pleasure to meet you. And I'm so sorry that I had to miss out on your lecture because I had a couple of classes to take, so I just took the classes, came here. I'll do this lecture, and then our Vice-Chancellor, who has joined just a couple of days ago, she wants to meet. So, to begin at the beginning, after that very kind introduction by both Madhumita as well as Professor SAHU, who's a very, very good friend of mine, and I admire her capability and her, she is one lady who has talent which is many faceted. So I would give anything to be in her shoes. So I admire her. I love her academic achievements a lot. So this connection goes back a long way. Now, today, first of all, I'd like to begin. Hello? Professor APARAJITA, I could just join. Okay. Yes. So can you see and hear me? Yes, of course, I can see and hear you. All right. And this screen is also changing. The slides are changing. Yes. Right. Grand. So I would just like to extend my heartiest thanks to Hindi University and the very dynamic Vice-Chancellor that the university has just got for having me over. It's a complete pleasure. And I would love to be there personally, but today we had a lot of things at the university as well. So things are there. So without further ado, let's get into business. Today, I'm going to talk about literary translation, practice, and sensibility. Now, I'll begin with something that Nietzsche once said. He said that words are but symbols for the relations of things to one another and to us. So words are the medium which connect one thing to another and then connect those things to us. So communication is one of the basic things over there. Now, if we come to translation studies, first of all, we need to analyze the word translation, which comes from the Latin word translators. Translators means to carry across. So the basic need of translation is to carry the meaning across from one language to another, from one culture to another. We will discuss that in great detail a little later. Now,
You know, when we talk about translation, the thing that comes to our mind is, what is the oldest known translation? Now, the translation is believed to have come into the world in countries like Mesopotamia. You know, we are talking about long back, even before Christ was born. So Mesopotamia and Anatolia and Egypt. Anatolia is a place which is now modern day Turkey, and Egypt and places of that sort. So what was the oldest known translation? You know, you all must have heard about the Gilgamesh epic. So the epic of Gilgamesh, which was in Sumeria, you know, that was translated into a lot of Southwestern Asian language. Hello? Hello. Yeah. Can you hear me? Yes, ma'am. Yes, sir. All right. So those were translated, the Epic of Gilgamesh was translated into the Southwest Asian languages during the 2nd millennium BCE, that is even before Christ was born. Then we have the Septuagint, which was the Hebrew Bible translated into Greek languages. The Septuagint is considered to be the first major work in translation in the western part of the world, and it was somewhere around the 3rd century BC in Egypt, in Alexandria. Then in India, you know, the question always comes to us that what were we doing in India? So in India, you know, we used to, there were, you know, journeys from Sanskrit to Prakrit to Pali to Sanskrit back again. So that was there. But the translation in the proper sense of the term came up in the Mughal period in the 16th century, when Emperor Akbar, he commissioned a translation bureau to translate some Sanskrit works into Persian language. And many of the Sanskrit works were translated, but the chief among them were the Ramayana and the Mahabharata, which were translated by Badayuni. That was in 1580. Then we also have the translation of the Bible, which was done into Konkani by Ignazio Arcamon. He was a Jesuit priest. He was a Jesuit missionary, and we are talking about 1667 over here. Then also we know the founder of the Asiatic Society, Sir William Jones. He translated the Abhigyana Shakuntalam, and that was in 1789. That year is easy to remember because it was the year of the French Revolution, 1789. Before that, a few years before that also, Charles Wilkins, he was the official translator of Persian and Bengali to the Commissioner of Revenue. He had translated the Bhagavad Gita into English in 1784. So this was what India was doing as far as translation was concerned in the very earlier times. The very ancient translations, among them, you know, the ones which are still extant, some of the ones which are still existing, are the Treaty of Kadesh. The Treaty of Kadesh was signed between the Egyptians and the Hittite emperors. The Hittite emperors, again, the people who belong to Anatolia, and it is the only ancient treaty with both versions, you know, both the Egyptian as well as the Hittite version surviving. And the other very important translated object from the years of yore, from the ancient times, is the Rosetta Stone. It dates back to 196-94 BC, and it is considered to be a major example of translation because, you know, the same decree which had been given by a group of priests had been carved in that stone, in the Rosetta Stone. Rosetta was the name of the place where the stone was found later on. And it was written in 3 languages, you know, 2 among which was Egyptian and also hieroglyphics. So that is the, you know, the earliest stone, the earliest instance of translation that is still existing. Now, translation, word and language play. This is an article which was written in 2025 by Thorsten Schroeder. Now, he said that by translation, we basically refer to interlingual translation. That is, one translation from one language to the other. And the transfer of texts
from one language to the translation of to the text of another language. Now, Anthony, let's see what some people had to say about what translation basically is, because before translation, studies came up as a separate discipline. You know, translation was taken as a part of linguistics, and many people tried to figure out what exactly translation means, you know. So Anthony Burgess said that translation is not a matter of words only. It is a matter of making intelligible a whole culture. So earlier, when we talked about Nietzsche, when we talked about earlier, you know, Thorston, we talked about words getting translated from one to the other. But here you find another term coming in, and that is culture. So the translation of culture is also important, and it goes hand in hand with the interlingual or intralingual translations. Now, there are some abbreviations which come in very handy when we are talking about translation studies, and we have to know those abbreviations. And I guess you all know it, but still, just to brush up our memory, one is ST, the other is TT, the other is SL, and the other is TL. What is ST? It is the source text. That is the original text in the original language, which will be translated into another language. Target text is the TT, that is the resulting product of the translation. You know, after translation, the language that you have translated to, that is the target text. And then SL is the source language, that is the language from which you're translating, and the language to which you're translating is obviously the target language. Now, Marcus Cicero, way back in age, he said, you know, he picked up a problem of translation. And he said, if I render word for word, the result will sound uncouth. Uncouth, you know, very boorish. So if I render word for word, that is something that we come to know as literal translation later on. So he said, if I render word for word, the result will sound uncouth. And if compelled by necessity, I alter anything in the order of wording, I shall seem to have departed from the function of the translator. So he says, you know, translation is between skill and characters. So he says, if I translate word for word, then sometimes I might sound very boorish. But if I take liberties and change words, you know, then you will come and say that I'm deviating from the original. So what do I do? So what do I do? This is a question that we will also ask today and try to answer that as far as possible. Now, Etienne Dolet, she in How to Translate Well from One Language to Another, which was brought out in 1540, said a few duties of the translator have been chalked out over here. Number one, the translator should understand the source language text and be able to capture its sense, obviously, because if you are translating from Bengali to English, or from Oriya to English, or from Hindi to English, and you don't know Bengali or Oriya or Hindi, then you cannot possibly translate, right? So you have to know the source language text. The second thing is a translator should be competent in both the source language as well as the target language. So you have to be competent in both what you're translating from and what you're translating into. The translator should not be literal in the translation. So here Etienne Dolet says that, you know, you cannot translate word for word, phrase for phrase. That will sound very weird, just like Cicero said that it will be boorish. And what else? The translator should use common idiomatic language. Now, this is a little tricky. We will discuss why it is tricky. For now, let's stick with what Dolet says. She says that the translator should use common idiomatic language in order to make the idioms come across. The translator should be able to reproduce the correct tone of the original. You know, the language is not just about a few words. It is also about intonation. It is the spoken word, of course, is, but even in language, you know, the punctuation, these things, they show up the temperament of a language, and that temperament of that language should also be reproduced in the target language text. That is what Dolet had to say. Alexander Fraser Tytler, let's see what he had to say. He wrote a book called The Principles of Translation, and there he said that the translation should recreate the original. Now, whereas Dolet was talking about how literal translation is not good, Tytler seems to say that the translation should recreate the original. Now, how do you recreate the original without really sticking to the original text, the source language text? It should resemble the original in style and manner. So he is advocating
being very, very true to the source language text. Or else it should read as easily as the original. It should not be like you are trying to translate one text into another language, and when you have finished, or translating, your translated text seems very obtuse and you cannot really understand what's being said. And the original text was much, much more facile to talk about comparisons. So, a dichotomy is always there. As if the source language text, the original text, is the master writer, and the person who has written the source language text is the master writer, and the person who has translated is the servant translator. So there is a kind of like hierarchical, tension going on between the source language text and the target language text. Now we have to try and remedy that. We have to try and address that. Now, even before that, going back in age, in the 1680s, when John Dryden wrote Ovid's epistles, he listed out 3 ways of translating, and he had a particular preference for one of them. I'll talk about that. So what were the 3 ways of translating? One was metaphrase, the other one, which meant literal translation, word for word, phrase for phrase. The other was paraphrase, which meant sense for sense. Even if you are not sticking to word for word, only the sense has to be kept alive. So sense for sense translation. And the third one was called imitation, by which he meant, free adaptation. So you're just taking the text, you're understanding the main, the hang of it, and then you're writing a text which is kind of like closely related, but not word for word or sense for sense translation. Now, if you really ask him about which one was his favorite was the paraphrase, because he said that the paraphrase was close to the original, so there was a certain amount of fidelity towards the original, as well as it afforded you some amount of creative, adaptive qualities. So it is a halfway house between the 2 extremes of metaphrase and imitation. So he liked paraphrase more than anything else. Now, going even back further in age, there was something in Germany especially, which was known as Übersetzen. Now, what is Übersetzen? Über means over, and Setzen comes from the word setza, which means to set. So here it meant to translate. Historically, it often referred to the more direct, technical, linguistic, and sometimes structural form, which means that, the same word for word, sense for sense translation that we are talking about. So when you're translating, you're being very true to the source text or the source language. It is known as Übersetzen. So that used to be the way of translation, even, before the Renaissance times and all that. Later on, there came something which came as a contrapuntal reading of Übersetzen translation, and that was known as Verdichten. Verdichten, it's a word coined by Martin Luther in his Sendry von Dolmetschen, and he said, he was actually, remember, he was adapting the Bible and he was posting the 95 Theses, so he needed translation to be facile, to be sense for sense, not to stick for word. So he said that why do we have to stick to Übersetzen? Why do we have to stick word for word? We can only translate keeping the sense, the main intonation, the main subject matter. If we can be true to that, then we can translate in any way possible. So he said that he wanted to justify adapting the Bible into a free but accessible German, prioritizing meaning over style. So he wanted to go out of that track of sense for, word for word translation, and that's why he brought about something called Verdichten. So it naturally moves beyond the literal word for word translation that Übersetzen, stood for, focuses on the target language and the culture to adapt the source text to the language and mindset of the reader. So here we are not going word for word, but we are going sense for sense, culture for culture, and we are trying to adapt to the listener, that is the target listener's sensibility. This is something very important, when you are translating from one language to another. So you have to be very clear, you have to be very careful about whether your target audience is comfortable
in understanding what you're saying. So you have to adapt to their sensibility. It's very important. We will talk about that later. So translation studies is as a separate discipline, is a kind of like a newish kind of discipline that came on later on. Now in 1972, Amsterdam-based American scholar James S. Holmes, this Holmes, and later on Gideon Torrey will come up, and so we will have the Holmes-Torrey map. I will talk about that as well. So who talked about translation studies as a separate discipline? James Holmes did. So he delivered a paper called The Name and Nature of Translation Studies, and that was the beginning of translation studies as a separate discipline. So he established translation as an independent academic discipline. What would it cover? Translation studies. It would cover the study of translation as both a process and a product. So translation is a process going from one language to another language, and it is also the end product which matters, the translated text which matters. He proposed a map classifying the field into two main branches. One is the pure translation branch and the other is the applied translation branch. I will talk in detail later on, just giving you the hang of things. Argued for separating translation studies from linguistics, like I told you just now, that earlier it used to be a part and parcel, a kind of like offshoot of linguistic studies, but Holmes advocated bringing translation studies to the fore, as a separate branch of studies, so that we could study translation with much more important, like, my friend Nandini was saying just now, the translation studies needs to be there in every syllabus. We need to be more careful and more concentrated on translation studies, because it is very important in order to make texts from all of the world accessible to us, so we need to pay more attention to it. That is exactly what James Holmes also said, that we need to separate out translation studies with much more important as a separate discipline. Writers in English use the term translatology, but in France, they use the word traductology with a G-I-E. And also in English also, we sometimes do use the word traductology with a G-Y, but mostly we call it translatology. Now, Susan Basnett, one of the chief as far as translation studies is concerned, she talked about something called the scopus theory. Now, we were, so far, I was talking about a lot of people who were deliberating about how to translate, whether to translate word for word, or whether to go, sense for sense, or whether to just take liberties and write your own text, just loosely based on the source language text. Now, Susan Basnett talked about something called scopus theory. Now, what is a scopus theory? She brought it out in 1980s, in 1984 to be exact. And it started with the publication of two books in German. One was The Foundation for a General Theory of Translation, and the other that was written by Catherine Rice and Hans Vermeer. Two very important names as far as translation studies is concerned. And the other was Translatorial Action by Justa Hol Mantari. Gives priority to the purpose to be fulfilled by the translation instead of prioritizing equivalence. So instead of going word for word, Susan Basnett's scopus theory talks about whether the main sense of the source language text is coming across in your target language text. That is what we need to see. Cultural translation. Remember, we were talking about how the word culture comes slowly with what Cicero talked about, that it's not just about words, but it's also about culture of the source language, the culture that the source language is associated with, to the culture which the target language is associated with. Now, if the two cultures are different, the big question that arises is, how do I make the culture of the source language people accessible to the culture of the target language people? There we talk about something called equivalence. I will come to that later. So this cultural translation was again formulated by Susan Basnett and André Lefebvre. They said that neither the word nor the text, but the culture becomes the operational unit of translation. So you're not going to take a look at the word, you're not going to pay attention to the word or pay sole attention to the word or the text, but you will pay attention to the cultural epistemology of the two languages.
Importance of exchanges between translation studies and other area of studies. Obviously, if we are talking about culture, then we are talking about a different genres or different studies which are culturally very heavily inflected, like gender studies, colonialism, post-colonialism, culture studies, of course, hermeneutics. You cannot talk about these things without talking about the culture of a certain part of the world. So all of these are getting connected with translation studies when we are talking about cultural translation. The concept of cultural translation comes from Homi Bhabha's, reading of Salman Rushdie, The Location of Culture. Cultural translation is a concept used in cultural studies to denote the process of translation. Okay, we'll rush through that. The concept uses linguistic translation as a tool or metaphor in analyzing the nature of transformation and interchange in cultures. Something that I was just talking about just now, that, if one language is getting translated into another language, it is not just one word getting translated into the word in another language, but it is a whole set of cultural values getting translated into another set of cultural values. And how we are going to make the two equivalent, that is the big million-dollar question. So far what we have talked about, let's just brush up our memory about that through some bullet points, and then I will go on into the next phase. So what are the bullet points? Number one, translation studies is an interdisciplinary academic field. Like I told you that, gender studies, post-colonialism, colonialism, you name it, it's all there in translation studies. It systematically examines the theory, description, and application of translation. The theory part, of course, theory description part is the theoretical part, the pure translation part, and the applied translation part is the application of translation, that is the praxis of translation. It helps in interpreting and localization. This localization word is very important. We will come to that later. Just like equivalence is a word which is important, localization is a very important word. It explores the history, philosophy of translation. Obviously, that is what translation studies is all about. It explores practical techniques of transferring meaning between languages and cultures, incorporating insights from linguistics, comparative literature, and technology. The interdisciplinary nature, the hermeneutical nature, all of that. It treats translation not just as a linguistic transfer, but as a complex act of cross-cultural communication. So we are harping on the word culture again and again. The translatological map, when I was talking about Holmes, James Holmes, who talked about making translation a separate field of study, I also named another name, that was Gideon Toury. So this translatological map will be known as the Holmes-Toury map, because the two of them, confided in each other in order to make up that map. Now, what is a translatological map? The goal was to move translation from a sub-branch of linguistics or literary studies into a distinct field, which James Holmes began. This map has been essential to the development of the field, later visualized by Gideon Toury. So Gideon Toury became the partner of James Holmes as far as creating this translatological map is concerned. What are we mapping over here? We are mapping translation studies. We are mapping how translation studies will branch out into separate, sub-branches, so that, translation can be understood better. The Holmes-Toury map. So what is a Holmes-Toury map? It divides translation studies into two main areas. One is the pure translation studies, and the other is the applied translation studies. We had sketchily talked about it earlier. Pure translation studies then talks about describing the phenomena of translation, establishing general principles. So you can understand we are talking about the theoretical part, and includes the theoretical, establishing the principles, like I talked about Scopus theory. So that is one of the principles. Then Giri Levy will come up and talk about the minimax theory. So these theories will come up when you're talking about translation, and that is part of the pure translation studies. And then you have the applied translation studies, which will teach you how to translate, how to get into the praxis, how to get down into business and translate. Now, what are we looking for then? When we are talking about translation studies as a separate discipline, thinking about translation studies, what exactly are we trying to figure out? What are we looking for? So we are trying to look for the source language text versus the target text, the original document and the final translated version, the finished version.
We are looking for equivalence. Equivalence is a word I told you that it's very important, because what is equivalence? It is establishing a functional relationship between the source and the target text. That is, there has to be a level of similarity, that can go up or go down, but there has to be a level of similarity between the source language text and the target language text. I mean, like, your source language text and target language text just cannot be poles apart from each other. Then it's not translation at all. So there has to be a similarity and equivalence between the two, and that is what we know as the equivalence with a capital E. Localization. I told you a little earlier that localization is very important. What is localization? Adapting a product or a content to a specific target market. I'll give you an example. Before coming to Kolkata, before teaching in Diamond Harbour Women's University, I used to teach in a place called Purulia, which is in the outskirts, which is kind of like 5.5 hours away from Kolkata. And in Purulia, around Purulia, there are a lot of rural places, and rural places which have very pagan ideas about the world, so on and so forth. So witchcraft is something that was very prevalent in some areas around Purulia. Now, when I was teaching in a university in Purulia, many of the students would come from the rural belts, and they were very well acquainted with the, the witchcraft which was performed in the rural belts of Purulia. Now, I was teaching them Macbeth. Now, Shakespeare's Macbeth also has witches, right? Now, these students of mine, they came up to me after the class, like students do all the time, and they came and said, ma'am, Shakespeare's witches are so different. And when we talk about witches, we think about a certain kind of witches, we certain kind of rituals, certain kind of, figure of the witch, which is not at all like Shakespeare's witches. So see, there is no equivalence over there. So localization means if you are going to translate Shakespeare's Macbeth into Mandhumi, which is the language of Purulia, the endemic language of Purulia, then you will have to bring those concepts of witches in a level where they can understand what Shakespeare was trying to say, right? So you will probably have to adapt Shakespeare's witches in a way that will be more easily facile to the understanding of the rural girls or boys from Purulia. That is what localization means. So you are giving a local touch to something that is being translated in order to facilitate the understanding of the target audience. Modes covers written translation. Translation can be of any sort. It can be written translation. It can be interpretation. That is, when you must have seen diplomats going from one country to the other, carrying, taking translators with them. So if I'm going to Germany, and I don't know German, then I will need a translator, right? So that is also a part of translation studies. Specialized translation, that is legal matters, specific branches like medical branches, legal matters, engineering, technical branches. They have jargon. So you need very specific kind of translation for that. Nobody can, all people cannot really do it. They need to be learned in that terminology. Audio-visual translation. We all come across films on Netflix and Amazon Prime, and even on the silver screen, where we find movies happening with translations, with what do you call them? Captions coming below. So the subtitles are also part of translation studies, right? So dubbing, accessibility for media, all of this is underneath the praxis of translation. So what are we looking for? We are looking for the source text and the target text, the original document and the final translated version, equivalence, localization, modes, audiovisual translation, adapting. This adapting part is where your software comes in. A little bit earlier, Nandini was talking about how ChatGPT is coming up and it's just, translating in a jiffy, and you guys need to be very careful about what you are signing up for, because, ChatGPT is not infallible all the time. So they do present rubbish sometimes on a silver platter. So
how softwares can be adapted, how websites will be created, and how plagiarism can be tackled. All of that comes within the adapting part of software. Now, ethics in translation, something that again harps on what you were saying, whether you should really do that and how much your responsibility as a translator is to stick to the original, because translation is something, it's very easy to fall into the trap of politicizing translation. So suppose I'm translating a document which is in Bengali. So I know Bengali, you don't know Bengali. So I'm giving the translation to you in English, and then I just tweak a few words in order to mean a little different from what the original text was doing. So the politics of translations will come in over there, of translation will come in over there. So we need to be very ethical as to how far our responsibilities take us and how far we can take liberties. Now, what are the key theories of translation? Equivalence, we already talked about it. So it is one of the theories that translation studies will talk in detail. The traditional goal of achieving equal value. So we were talking about the master translator and the servant, the master writer and the servant translator. So how to, bridge the gap between the two and bring a kind of equivalence. That is what equivalence looks towards. Scopus theory, we have already talked about it. Scopus theory is, it prioritizes the purpose of translation. It prioritizes what you're trying to achieve. And the mode of achieving that can be negotiated, so you don't have to go word for word, you don't have to go phrase for phrase, as long as the main sense of what was said in the target text, in the source language text, is fulfilled in the target text. So that is what Scopus theory is all about. Polysystem theory views translated literature as a subsystem that interacts with the target culture's broader literary system. So polysystem theory says that when you are translating into a target language text, you are actually becoming a part of the cultural periphery of the target language text. The target language text must have been informed. The source language text was informed by one set of culture. The target language text also has to keep in mind, because of equivalence, because of localization, it also has to keep in mind the cultural information of the, or cultural setup of the target language reader. So that's why it becomes a subset of the target language text. Cultural turn, a shift since the 1990s that emphasizes how power, ideology that goes into translation. Okay. Now, Giri Levy was one of these people who talked about the minimax strategy. Now, what is strategy? What is the minimax strategy? He said that, translation is a very, it takes a lot of energy. So Giri Levy said that, the goal should be how to achieve the maximum of effect with the minimum of effort. So he says, take things intelligently, take things in a thoughtful way, and try to figure out how translating from the source language to the target language can be made easier without you really fighting for it. And at the same time, you achieve a lot more equivalence, a lot more localization, so that you become a lot more accessible and acceptable to the target language audience. So that is the minimax strategy, achieving the maximum effort with the maximum effect with the minimum effort. That is what Giri Levy said. Now, like I also said earlier, the translation studies is very interdisciplinary in nature, because it, of course, it used to be a subset, it used to be a branch of linguistic studies. So it has to do a lot with linguistics, obviously, because it is all about words. Semiotics, it has to do with semiotics, the structure of signs. Philosophy, computer science, because you are doing things on the computer, and cultural studies. So we will have to, when we talk about translation studies, we take all of this into account, because all of these are very important and very, these are like tributaries contributing to the mainstream of
translation studies. Machine translation. Now, what is machine translation? Nowadays, nobody sits and translate many, I won't say nobody, that's a very blanket statement, but most of the time, you have translation done through machines. And then a little bit of post-editing goes on. Now, post-editing is very important. Like a little while ago, you heard that I photograph a lot. I do a lot of, wildlife photography. So when we learn wildlife photography, we learn a lot of things. Like we learn how to handle the big camera. We learn how to handle the shutter speed, how to handle the aperture, the light control, the shadows, everything while photographing. We also learn how to do post-processing. Post-processing is after you take the photograph and you come back home, you download the photograph, and then, you have to do a lot of post-processing if you are photographing in RAW. So every single process, I think, which includes going from here to there, that has a lot of post-processing to do. Here we call it post-editing. So what is that? The use of software to translate text followed by human correction. So this human correction is where the post-editing part is relevant. What are the tools? There are some computer-assisted translation, in short, the translation people call it CAT, and post-edit machine translation, that is empty outputs. So we also have that. In translation studies, problems arise when a direct equivalent for a source language item does not exist in the target language. Now, what happens is that the machine cannot think, right? So the machine cannot consider, the machine cannot rack its brains as to, if I don't have an equivalent of this word to the other word, how else can I say it? It doesn't know how to do that. It only knows how to literally translate, right? It doesn't know moods. It doesn't know culture inflections. So it will only do the literal translation part. So it can result in a lot of incongruities. I will come to that a little later. Now, Friedrich Schleiermacher, he said, the more closely the translation follows the turns taken by the original, the more foreign it will seem to the reader. So he said that if you try to stick word for word, the problem is that if you try to translate every word to word, then sometimes you might land up sounding so foreign that the target language speaker will not be able to understand you at all. So this brings us to the next part, that is untranslatability. There are some parts which are untranslatable. There are some things which are untranslatable. How? Let's take an example. Yahan ka mahol acha hai. We often say that. If I literally translate it word for word, it comes across as, here's ambience is good, which sounds so odd, right? Weird. Main tum pe marta hu. Many youngsters say that, right? And then you say, I die on you. So that is ridiculous, right? Aapka shubh naam. I have heard a lot of people say this, what's your good name? So there is nothing called a good name in English, because you don't have a good name and a bad name. But in Indian culture, because translation is culturally inflected, we do have a shubh naam, and like in Bengali we say bhalo naam and dak naam. So my bhalo naam is APARAJITA, and my dark naam is something else which I'm not going to tell you right now, but I do have a dark naam. So, when we say in India, what's your shubh naam, what's your bhalo name, what is your tomar bhalo naam ki, then we mean that shubh naam. But in English, if you translate your good name, a foreign, a British native English speaker will scratch his head thinking, good name? Does that mean that the person must have had a bad name also? He must have done something wrong, maybe gone to jail or something and had a bad name for himself. Was it like that? So, it makes no sense. So you will end up sounding very foreign. So linguistic untranslatability is something that needs to be addressed. This, I'm not going to say anything else. We all know, right? Now in Bengali, sometimes a wife would call her husband, because in India, we don't
Of course, these days we always call our husbands by the name, but even in a generation before us, our mothers never called their husbands by the name. So they would say "Hego shuncho" or "Aji sunte ho." Now, how do you translate that in English? Are you listening? Does it catch that sweetness that is there in "Aji sunte ho" or "Hego shuncho"? Are you listening is pretty much very rough and tough. So it even sounds a little belligerent. So this equivalence is not coming up, right? So that is what we need to be very careful about. That is what untranslatability is about. Now, when we talk about untranslatability, then there are two kinds of untranslatability. One is the linguistic, the other is the cultural. So linguistic, when you don't have word for word, you just don't have an equivalent word in your language. And cultural untranslatability is like "Hago shuncho." So you don't speak like that in your language. So you don't have, you don't have the cultural equivalence, right? Now, here we come across two hypotheses. One is the Sapir-Whorf hypothesis, which says that the language we speak restricts our ability to think, reason, and understand. By which they mean to say, Sapir and Whorf mean to say that, when we are when we have a certain language that we are born into, we understand life and culture, or rather, I would say, we understand life in a certain cultural way. And because our language teaches us to do that, we can't think about the same thing in any other way in which other languages do. Like just now, if I said that, a foreign, an Englishman, an English woman, she is used to calling her husband by the name. Now, if we come and translate a Bengali text or a Hindi text into English, and we don't want to name the husband, we don't want the wife to name the husband, then the British English speaker will be at a loss to understand why isn't she taking the husband's name? Why isn't she calling her husband by the name? Why? Because according to Sapir-Whorf, the English woman has been taught by her language and the culture behind it to think in a certain way, and she cannot think beyond that. Similarly, the Indian woman has been taught by her language and the culture behind it to think in a certain way, and that's why she cannot think beyond it. So, that is what Sapir-Whorf hypothesis is all about, that our language and our culture, the culture that backs it up, teaches us to think in a certain way, and we cannot think beyond that. So they say if a language has no words for concept X, whatever the concept is, the speakers will never be able to understand what X means. But Guy Doscher, as late as 2010, he wrote a very nice book called Through the Language Glass, Through the Looking Glass, Lewis Carroll wrote. He, like that, he wrote a book called Through the Language Glass. In an interview for the Paris Review with Mark De Silva, he made it clear. He said that this is not right. If your language doesn't have an equivalent for a certain word, it's not like you lose the capability of understanding what the word means. Maybe there is no equivalent word, but you will understand the concept. And so he brought across contrapuntal theory. And that is known as the Bose-Jacobson principle. Based on, Guy Doscher coined this term, the Bose-Jacobson principle, by which he means to say that language shapes thought not by limiting what is possible to say, but by forcing speakers to habitually pay attention to specific information. By which he differentiated between must and may. What is the difference? Your language teaches, and the culture behind it teaches you that you must think in a certain way. That's why you think that the wife cannot name the husband. But that doesn't mean that you may not think in a different way. So if I come and tell you that women outside India do call their husbands by name, it's not like you won't understand. You might find it weird, but you will understand, right?
So that is what the Bose-Jacobson principle is all about. And we have to understand that, like even in India, you know, like in Hindi, you guys say, police aa rahi hai. And in Bangla, you know, we don't gender attribute nouns like that. So we just say, police yes. Hey, Kumar, just give Kumar, lecture it. একটা লেকচারে আছে, লেকচারের মধ্যে আছে, দিচ্ছি। Right. So that is what the Bose-Jacobson principle is. Sorry for the disturbance. Somebody had come in. So that is what is the difference between the must and may principle. Now let's go into this is what Guy Deutscher said, that in every language there are some leftover words, which, you know, there are words which are not there in our vocabulary, but the sense is understandable. Let's go through some words like that, right? I have brought a bag full of words like that. Now let's see if we have equivalence to that. It would be wonderful if I could see all of you and interact with you right now, because this should be an interactive thing. But still, I would urge you to listen to the word and try to find out an equivalence, okay? So Waldensamkeit, this is a German word, and it means the feeling of being alone in the woods, in the forest, and feeling very connected to nature. You know, like I understand this word very well, because when I go wildlifing, when I go wildlife photographing, you know, in the middle of nature, in the deep into the jungle, and I feel at one with nature. But a person who doesn't do wildlifing might feel that weird, you know. But do you have an equivalence of that in your language, in one word? That is something that we need to think about. Again, culacino in Italian, it means the mark a cold glass, you know, a glass which has been brought out of the fridge. You know, it will have water droplets on the outside. And if you keep it on a glass table, you know, it will leave a round mark. So that is known as culacino. Do you have an equivalent word for that in your language? But you can understand what I'm saying, right? So this is the may and the must difference. Again, itsuarpok, that is in Inuit language, the language of the Greenland people, the feeling of anticipation that leads you to keep looking outside to see if anyone is coming, you know. So sometimes, you know, you're expecting a guest, or you're expecting a very loved one, a near and dear one. So you keep going to the door, trying to find out whether the person is already there, whether the person is coming. Now, do you have a word for that, like they have in Inuit? Komorebi, which is Japanese, sunlight that filters through the leaves of the tree. You know, when you're in the middle of underneath the canopy of trees, and the sunlight filters through that, it is known as komorebi. Do you have an equivalent word for that? Pokamuchka, which is a Russian word, and it means a young person who asks so many questions, a very cheeky kind of young person who asks a lot of questions that you feel like with that person, irritated with that person. So that person is known as Pokamuchka. Sobremesa, which is a Spanish word, it means, you know, sometimes we have dinner, and after dinner, even sitting at the table, we go on chatting and gossiping. That is known as sobremesa. Now, we don't, in Bangla at least, we don't have an equivalent word. I don't know about Hindi or Odia or any other language that all of you speak. Jayus in Indonesian, it means, it's a term for a joke which is so badly told and so unfunny that you laugh because of that. You laugh because it is so unfunny. You know, how can a joke be so unfunny? So you laugh because of that. That is known as Jayus. Panapuo in Hawaiian, it means the scratching of your head in order to make you remember. You know, you have forgotten something and you scratch your head. That is known as Panapuo. Goya in Urdu, this a lot of us might know. Then you have mangata in Swedish, in the language of Sweden, which means, you know, sometimes when you have the moon reflected on still water, you find the reflection zigzagging like a roadway. That is known as mangata. Then you have Tosca, again in Russian,
where it is a sensation of great spiritual anguish without any, sometimes don't we feel restless? We can't put our finger on it. We don't know why we are feeling restless, but we do feel restless. That is known as Tosca. Mamila Penatipe, this is Yagam. This is the Tierra del Fuego, is a small land and the indigenous language. What does it mean? The wordless yet meaningful look shared by two people, who both desire to initiate something but are both reluctant to start. Suppose, you have gone into a fresh class and you're sitting beside a girl or a boy, and you look at him or look at her, and the other person also does the same. Both of you are trying to initiate a conversation, and both of you are thinking the same thing. That connectivity, that connection is known as this. A mother who relentlessly pushes her children towards academic achievement, something that we know as helicopter mom, that is known as kyoiku mama in Japanese. Turtle, which is Scottish in Scotland, it means hesitating while you're introducing. This happens with me so many times, because many a times it so happens that my student, whom I have probably taught in 2001, comes across, and she or he expects me to remember her, his or her name, and I forget. And so while I'm introducing, I'm hesitating. What was the name of this fellow? That is known as turtle. Shiluba, that is a language from the Congo. That means a person who's ready to forgive you once, ready to forgive you twice, but the third time, he's going to walk away or she's going to walk away. Prosvonit, that means, you call a mobile phone. This is something that a lot of people do. They call a mobile phone, and the moment it rings, they close the call and expect the other person to call back so that it saves you a little bit of money. Then kafune is a Brazilian Portuguese term that means, when you're running your fingers through someone's hair very gently, very lovingly. That is known as Toshku panic. That means, translated literally, it would mean gate closing panic, by which, it means sometimes, what happens is when we grow older, you just decide that you can't do anything else. So you just don't even try. Like, at one point of time in my life, I've done a lot of weird things in life, like, jumping off a cliff with a parachute, going into underneath the water and scuba diving, riding horses, stuff like that. Now, one of those things was I wanted to do a little bit of bungee jumping. But, these days, because I am old now, that's why, I just close the door on that possibility. And I say, no, I don't want to do that because I have a slip disc problem and it's going to get aggravated. So I don't want to try even. So that is the gate closing panic, because I'm old, I don't even want to do it. That is one word. Now, in our language, I don't have a one word equivalent for that. Wabi sabi. That means, a way of thinking that makes you not ashamed of the imperfections, but also inclusive of imperfections of life. And you get to understand that you are, life is like that. So, dipaisma, that is in French, that means the feeling that comes from being in one's home country. This probably, in a lot of Indian languages, we would say, what would we say? We would say, but still, in one word, I don't think we have anything, So, but in French, you do have that word, dipaisma. Now, tingo, which in Pascuanese, it means the act of taking objects. There are people in this world, who will come to your house and they will take a look at a pen and they will say, this pen is so beautiful, may I borrow it? And then the next day they will come and say, this, hairband is so beautiful, can I borrow it? And slowly, all your belongings go and land up in the other person's house. That is called tingo. Now, lapel du vide, that is again a French word. It means the call of the void, by which you means, sometimes this is a very dangerous kind of thing. It is this instinctive urge to jump off from high places. People who have vertigo sometimes say that, vertigo is the fear of heights and your head reels and you feel nauseous when you're in a high place. So sometimes, people with vertigo, they say that, if I'm in a high place, I feel like, what would happen if I just jump from here? So that is known as lapel du vide.
Yaburni in Arabic, it means a declaration of one's hope that they'll die before another person because of how difficult. Like, sometimes, partners, husbands and wives, they sometimes wish that may I die before the other person, because I can't live without the other person. So that is known as Yaburni. Sodade is the feeling of longing for something or someone which you loved at one point of time and still love, but it is lost. It is no longer yours to possess. Padkos in Afrikaans means food. It literally means traveling food, road food. So food that you carry in during your travels. That is known as padkos. Dolitis, that is to lie with your face turned down to the ground. This probably in Bengali it would be upur hoye shoa a little bit, but I don't know about other languages. Fuzil is the small pieces of, like I have a lot of dogs at home. So any dress I wear, especially if it's a black dress, it will have fur and lint or sticking to it. That will be known as fuzil. So helax, which is Latin, which is a big toe. Nostalgie di la bue, literally meaning yearning for mud. That feeling which yearning for mud means, having an attraction for things which are socially beneath you, so which are not really up to your standard. Zoyizi, which is a Chinese term, which means a woman after her childbirth, she is supposed to spend a whole month in bed where her mother-in-law looks after her. Lucky girl, I would say. Mother-in-law looks after her, and then she's not really allowed to have all kinds of food. She's only allowed to have certain food and drinks to have. That time period is known as Zuo. So that is Indian. Just give me a moment. Yes, Madhumita? Is the time up? Okay, I'll wind up now. Right. So the time is up, and yes, I'll have to wind up now. So these are some of the words. Let's just rush through this. Okay. So the linguistic and structural problems are concentrated on some areas. One is grammar and syntax, because translating becomes difficult because of the grammatical and syntactical differences. Like in Bengali or Hindi, we have the SOV structure, right? Main khana khaungi. So your khaungi comes at the end. The verb comes at the end. But in English, you have the SVO structure. That is, I eat food. I will eat food. So that creates a problem. Lexical gaps, ambiguity. I'll just come to this a little bit later. The cultural. Okay, I'll just skip through these. A lot of slides. Okay, this is a very ridiculous thing, just to check how machines translate idioms. I just wrote it's raining cats and dogs, and when I put it into machine translation, they said eta brishtir biral kukur, which means it is the cat and the dog belonging to the rain. Eta brishtir biral kukur, which is a completely ridiculous idea. So okay, these are about machine translations. Okay, this is again another big problem that happens. Homonyms are words which sound alike but which have different meanings, right? So sometimes, in literature, suppose you're trying to translate from Bengali to English. Now, in Bengali, we have a saying called "Mone kori 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 kintu hoy hoy na." Mone kori kori kintu hoy na. Now the catch is, kori, the word kori in Bengali has two meanings. One is the verb to do, and the other meaning is elephant. So when I say mone kori kori, it means, if I translate into English, it means I wanted to make, maybe out of mud or putty or whatever, I wanted to make an elephant. The second part of the sentence is kintu hoy hoy na. Hoy means, again, doesn't happen, and it also means horse, HORSE, horse. So in Bengali, when I say mone kori kori,
Kintu hoy na, it means I wanted to make an elephant, but I can't even make a horse. In English, that homonym is completely lost. You cannot translate, right? So these are problems, alliterations, like when Hopkins was saying, whatever is fickle, freckled, you know, with swift, slow, sweet, sour, how do you translate that in Bengali? Or how do you translate that in Hindi? Without losing that alliteration, right? So these are the problems. Again, technical jargons, medical terms, it's very difficult to translate them into Bengali. So these are, okay, I'll just skip through all of that. Equivalence. All right, so this is the last slide. So like we said that we need to go not word for word, but for culture to culture, so that like Raina Maria Rilke, he in the 9th elegy said that when a man travels to the summit of a mountain and when he comes back, you know, he comes not with an empty hand, he comes back with a lot of things. And what does he come back with? He comes back with experiences. He doesn't carry a handful of earth, but he carries the handful of earth inside his mind. He carries experiences, he carries a whole culture, and he carries the pure word in which to translate that culture into words. So we need to make that a motto for our translatology as well. And we need to understand that the word and the culture behind it needs to be translated and not just the word for word, right? Thank you very much. I'll stop here today. Yes, Madhumita? Yes, ma'am. Your insightful perspective and rich academic experiences have truly enriched this session. The depth of your ideas and the clarity of your presentation have given us much to reflect upon and learn from. We are sincerely grateful for your valuable time and for sharing your knowledge and expertise with us. It has been a privilege to listen to you. Once again, thank you, ma'am, for such an inspiring session. Thank you for having me over. It's been a pleasure. Our Vice-Chancellor, ma'am, to share her reflections and valuable remarks. Ma'am? ओके मधुमिता, वहां पे जितने भी माइक है सबको म्यूट कराओ क्योंकि एको हो रहा है। जी जी मैम, बिल्कुल मैम। उस कमरे में सारे माइक को पहले म्यूट कराओ, ठीक है? ओके, so Professor Aparajita, I'm sure that our students are highly benefited. They are actively listening to you. They are going to send you so many questions after this session, and even I was listening to you off and on. Of course, I think I have taken down most of your important points, and your presentation was very well researched as expected. Nothing less is expected from a scholar of your repute, and Hindi University is hugely benefited by you. When we will convert our MA in Translation Studies to a diploma or certificate in Translation Studies, that is when we will once again request you to share your expertise with us and guide our faculty. It's very necessary, very necessary. Yes, absolutely. And I know that Nandini herself is a translator. She's a poet. I mean, like, I'm so green-eyed with jealousy. I mean, like, how can a person be so multifaceted? How can a person be so dynamic? I mean, like, she's a poet. She's managing a university as a vice-chancellor, and I know how big a job that is. She writes such a lot. She's the job lecturing is here and lecturing there, and I have listened to her talking. So it's really wonderful. We also in our university also. Yes. We also in our university have, we have a center for culture studies where we would like to go for translation studies. And if you are doing something like that, I would love to have a collaboration between the two of us, you know, the two universities. Oh, yes. Actually, you know, Professor Aparajita, I was coming to that. And, these days, we are into so many collaborations. Whichever institute invites me as a chief guest, they end up collaborating with me. Probably I am too imposing or something. Yes. So we will discuss the possibility of a collaboration with you, some translation project. But also the personal level collaboration can be, I would send you a draft of the UGC NET syllabus, which I am discussing with the UGC these days. And the spirit of that UGC NET syllabus is
translation as seva. You have heard about kar seva, isn't it? Yeah. In Yeah. Sikhism, they have this kar seva concept. Yes. Everybody goes there to give their seva, to clean, to cook, to feed people. So translation is nothing less than a kind of a seva to our culture, our cultural heritage, the dying, endangered cultures, our languages, and our Absolutely. tangible and intangible systems. So we are trying to create that kind of a pedagogy in our UGC NET examination in translation studies, and multiple presentations are already over. I will share those documents with you, and help me out if anything is missing. Absolutely. I would really be interested to know. Yeah, sure. Please do that. And there are 10 chapters, 10 units in the UGC NET syllabus. I will show you everything. Last week, I was talking about that in some university where people are showing interest. So that is how I am trying to, engage the best brains in the country to design the UGC NET syllabus so that we can come up with something really seminal and important for our scholars. The students sitting in front of you in Hindi University, they are very enthusiastic. They're looking forward to some career vis-a-vis translation, and for that we are also trying some platform for them. And I'm very happy and proud to share with you that last 1 year, I am here since 1 year and little more than that. Multiple students have got placements in various institutions like Rajbhasha Adhikari positions, and in the bank, in the national banks, they are getting first positions in competitive examinations. Our students are really doing very fine, just they need some sort of hand holding. That is where these kind of workshops and experts like you will be useful for them. And yes, I have to comment little bit about the lecture you delivered, because I am on the other side of the table, no other reason. I mean, when somebody like APARAJITA delivers a lecture, and you should have the audacity to comment, but allow me to put a little bit of comments here. You started with the fidelity to sense, you quoted Cicero, and the pedagogical freedom of Cicero's principle of translating sense for sense rather than word for word or grounds. Whenever I go to deliver in a lecture on translation studies, I tell them that translation doesn't mean taking lexicon after lexicon. It is about taking one culture to another. Absolutely. In one of my research papers titled "Translation as Power," I talked about translation as culture. So the translator is empowered to take one culture from their position, their subject position, to the other culture. So the translator is very, very powerful. Also, the translator is creating some kind of power for the new text. The new text is again, like a newborn baby. It has nothing to do with the former text if you take it as a standalone text. Sometimes if you read a translated text and you don't remember that it has been translated from some other language, I think they are like the success of the translator, that we are not reminded about any other language. Rather, we are presenting it as it is our own translation. Our own culture. So you talked about that idea of Cicero. Then also sacred translation and the ethics of meaning vis-a-vis translation of the Bible. In the first part of your lecture, started with the translation of the Bible, and I think that was a groundbreaking, the turning point for the entire civilization. I remember when we were children, our English teachers used to tell us that Shakespeare's texts and the Bible, if you read everything, one Oxford dictionary, then all the texts of Shakespeare, and then the Bible, then you complete English literature. This is what our teachers used to tell us. Maybe your teachers might have said the same thing to you. So I was very glad when you referred to the translation of the Bible and the ethics of the meaning. The Bible and the translation history of the Bible, it demonstrates the pedagogy and the negotiation of faith, power, authority, and linguistic accessibility. And the Bible has been translated to almost all the languages in the world. Initially in the world, there were 6 lakh languages, and today there are 6,000. The languages have died a natural death in the absence of anyone documenting and creating any archive for them. But yes, the Bible has served its own purpose here. There are many languages where there is no other text except the Bible in the world. Like True. I had been to
Mauritius for some language sessions, and I asked the last speakers of some languages, what is your engagement here? They could show me only translated Bible and nothing else. So probably through the Bible, once you are trying to preserve some of the most endangered languages and cultures, and you being an eminent professor in English, so the translation of Bible was very, very apt and accepted. And then the third point you emphasized was transmission and digital power. We have long debates about the canons and building canons, but in this kind of a controversial situation about canons, something that may be canonical for A may not be canonical for B. In this kind of a scenario, you also talked about new canon formation through translation. In fact, Unit 3 that I proposed in the AGC next syllabus is canon formation through translation. And I was so glad when you hinted at canon formation. That was really, really important. And some sub-themes have been taken. A lot of European, American texts have been taken there. You will be very glad to see that. Then the next point that you emphasized was the tools translation from philology to digital humanities. You actually digital humanities and post-truth. Even post-truth. So when you are translating some text, you are creating post-truth for that text. For example, you are giving examples from the Bengali literature. Somebody who doesn't know Bengali. Yes, so somebody who doesn't know Bangla, if the text is translated to, say, English, and then from English to French or German or something like that, then we are creating something through digital humanities being the root of that translation. We are creating a scenario of the post-truth. And that is when, experts like you are very helpful. We are trying to have a workshop. Yes, ma'am. We are having a workshop on AI for our students, and we will take up this issue very seriously. And the next point that you emphasized was classical languages as world archives of thought. So the classical languages are not just languages, they're archives of thinking processes of a society. You look at the text like 100 Years of Solitude. That is not a text, that is a civilization. So that is the building of the 21st century. Because, you and I, we being teachers of English, we know that 100 Years of Solitude kind of texts are the best texts of 20th century. When they are translated to many languages and they are presented as texts of culture, then they are serving one entire civilization. So your lecture today has been extremely helpful for our students and faculty. I would ask Dr. Madhumita to take all their questions and their points and proposals and then pass them on to you through me, of course. We are not going to really trouble you by making phone calls, but we will certainly send you our questions and our comments and observations, and maybe we can take one paper from you and we will make it a part of our Hindi University journal. The paper will be a part of our archive. Thanks a lot once again for being a part of Hindi University. So now you are a part of our family. Thanks a lot. Thank you so much. It's an absolute honor for me. Yeah, it's an absolute honor for me. I mean, like being invited to deliver whatever little I know about translation, and this is such a huge, and it's so gladdening a thought that you are thinking about translation studies in such a deep manner and you're organizing, workshops like this. This is a step in the absolute right direction. So hats off to you for initiating, movements like this. I would call it a movement because, the children these days need to understand how important it is to have translation as a discipline, and know the nitty-gritties of it. So I'm glad that you guys are doing this. It's a step in the right direction, absolutely. And I'm very honored and very happy to be a part of it. So I should be the one to thank you. Thank you so much, Pat. Thank you for the time. I won't be able to do anything without the support of my faculty and the staff of the university. So they are really cooperating. They are doing good work. I'm In a brief question and answer interaction with our speakers. If you have any questions, reflections, or comments related to the lecture, you are most welcome to share them. Offline participants may raise their hands, and online participants may share their questions in the chat box. So, do you have any questions? Yes, ma'am. Okay.
Ma'am, first of all, I would like to say that Madhumita, I think I am being called to the Vice Chancellor's office, so maybe I shall have to leave now. And you can send me the questions by. Yes, you are. You please, you log out. You please log out. You go to the meeting. Thank you, sir. Madhumita will get in touch with you. Yes, absolutely. Thank you so much. All over again. Okay, bye bye. I will call you this evening. Okay, bye bye. अच्छा, Professor Sethi, you are here, I think. Yes. Okay, आपने सुना क्या? इनके बात आप सुन रहे थे क्या? नहीं, मैंने देर से ज्वाइन किया क्योंकि मॉडरेशन का काम चल रहा था, तो अभी बाद में ज्वाइन किया है, जो है ना जी, ये रहा। क्लोजिंग में माफ सुन रहा था जरूर, जब मैडम अभी बोल रही थी क्लोजिंग कर रही हूँ तब ज्वाइन किया था। अगर आप लॉग कर सकते हैं, मधुमिता लोगों से क्वेश्चंस लेके आपको भेज देगा। अगर वहाँ फैकल्टी हमारे सीनियर प्रोफेसर कुछ बैठे हॉल में, भारती जी बैठे हैं, सब कुछ, सुशील जी बैठे, सब लोग, अगर कुछ उनको कुछ पूछना है, अजित आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछिए सेठी जी से। सेठी जी के पास बहुत सारे आंसर्स है, क्योंकि इंडिया का पहला पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन एंड बहुत ही बड़ा एमए इन ट्रांसलेशन उन्होंने सिंगल हैंडेडली डिजाइन किया। आप उनको पूछिए। चैट बॉक्स में लेकर अपराजिता मैम और हरीश सर दोनों से तो सर यहाँ उपस्थित फैकल्टी मेंबर्स, अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, सुशील सर, भारती सर, दिव्या मैडम, अजीत सर, रेखा मैम, अगर आपका कोई प्रश्न हो, so ma'am, let me move forward. Okay. Thank you to all. Before we move ahead with the activity and certificate distribution, I would like to express my heartfelt gratitude. I extend my sincere thanks to our Honorable Vice-Chancellor, Professor NANDINI SAHU ma'am, and our distinguished speakers, Professor HARISH SETHI sir and Professor APARAJITA ma'am, for their inspiring presence and valuable guidance. A special note of thanks to Dr. Ajit Kumar Das sir for his constant support and encouragement. Thank you so much, sir. I would also like to acknowledge the efforts of our technical team, Rajda, Amanda, and Kaveri, for their seamless coordination and support. My heartfelt thanks to all enthusiastic participants for making this workshop truly meaningful. Thank you so much. अब जो आज की कार्यशाला की गतिविधि है, इसके लिए मैं अजीत सर को आमंत्रित करना चाहूंगी और अपने मंच पे शब्द हूँ कि वो आपको इसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, हमारे जो वक्ता जुड़े हुए हैं ऑनलाइन ऑफलाइन सभी को मेरा नमस्कार। आगे की जो गतिविधि है इसके बारे में मैं सभी के सामने अपनी बात करता हूँ। हमारे वक्ता जुड़े हुए हैं सर, अगर वो अगर किसी कानून की वजह से बेटा हम अपने अब हम कार्यशाला की गतिविधि की ओर बढ़ते हैं। सभी प्रतिभागियों को एक शीट साझा की जाएगी जिसमें आज की गतिविधि दी गई है। आपको इस गतिविधि को पूरा करके शीट मेल आईडी पर सबमिट करना होगा। ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं जो प्रतिभागी ऑफलाइन यहाँ उपस्थित है, इस कक्ष में इस रूम में उपस्थित है, वे अपनी शीट यहाँ सीधे बाइकमेंट जमा कर सकते हैं। इस गतिविधि के परिणाम की घोषणा कल की जाएगी। अभी हम लोग गतिविधि की कॉपी देंगे, उसके सब परिणाम की घोषणा कल करेंगे। हमारे निर्णायक सर डॉक्टर सुशील कुमार पांडे सर इस गतिविधि का निर्णय करेंगे और इस गतिविधि का जो भी रिजल्ट होगा, जो भी परिणाम होगा, वो हम लोग कल सूचना सूचित करेंगे और 1 तारीख को हम लोग सर्टिफिकेट देंगे ईमेल के माध्यम से।
सुशील करण द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर आप में से श्रेष्ठ 5 प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा। उन्हें उनके स्थान के अनुसार पुरस्कार स्वरूप प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। मैं राज से अनुरोध करूंगा कि ऑनलाइन प्रतिभागियों के साथ गतिविधि किसी साथ मैं राज सर से आग्रह करता हूँ कि ऑनलाइन सीट के माध्यम से करें। ऑनलाइन प्रतिभागी जो जुड़े हुए हैं वो स्क्रीनशॉट के माध्यम से स्क्रीनशॉट लेकर इसे सॉल्व करके दिए गए मेल आईडी पर जो है आधे घंटे के भीतर भेज। इसके साथ ही मैं डॉक्टर मधुमिता ओझा से अनुरोध करता हूँ कि वे यहाँ उपस्थित प्रतिभागियों को भी सीट उपलब्ध कराएं। आप सभी के पास गतिविधि पूरी करने के लिए कुल मिलाकर 30 मिनट यानी आधे घंटे का समय है। कृपया निर्धारित समय के भीतर अपनी गतिविधि पूरी कर दें और उसे सबमिट कर दें। इस गतिविधि के उपरांत ऑनलाइन प्रतिभागियों को उनके प्रमाण पत्र ईमेल के माध्यम से भेजे जाएंगे और ऑफलाइन प्रतिभागियों को उनके प्रमाण पत्र यही सेमिनार हॉल में प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन प्रतिभागी जो भी जुड़े हुए हैं वो कृपया जो है मोबाइल का इस्तेमाल न करके अपनी बुद्धिमत्ता से पूरी ईमानदारी से बहुत बहुत धन्यवाद। और सीट में देखिए नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, मेल आईडी और यूनिवर्सिटी का नाम है वो कृपया फिल अप करें। 50 आधे घंटे का कुछ समय है। 3 पेपर दिया गया है और 3:50 में हमको पेपर दे देंगे। को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा इन 5 लोगों को कल फोन किया जाएगा और उन्हें उनके मेल आईडी पर सर्टिफिकेट जो है भेजे जाएंगे।
आभार, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और इसी के साथ मैं हिंदी विश्वविद्यालय का शिक्षक डॉक्टर सुशील कुमार पांडे सर, डॉक्टर के भारती सर, डॉक्टर रेखा त्रिपाठी मैडम, डॉक्टर मधुमिता ओझा, सुमित यादव और यहाँ जुड़े टीचिंग स्टाफ है, जितने भी नॉन टीचिंग स्टाफ है और जितने भी छात्र हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। क्योंकि ये छात्र विशेष तौर पर आभार के पात्र इसलिए है क्योंकि आप लोग के बिना यह जो कार्यक्रम है, यह जो वर्कशॉप है, संभव नहीं था। आपके बिना ये बिल्कुल भी संभव नहीं था, इसलिए आप विशेष तौर पर आपके प्रति हमारा जो है आभार बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं एक बार पुनः सभी विजेताओं और प्रतिभागियों को हार्दिक बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप सभी की उत्साही सहभागिता में इस कार्यशाला को जो है वास्तव में सफल और यादगार बनाना हमें आशा है।